यो 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 व्हाट इज अप गाइस, क्या बोल रहे ली आज पब्लिक। जेंशिन फिर स्ट्रीम पे ही शुरू कर रहा हूँ फिर से। Wind strike! Scatter! Propagate! Midnight Phantasmagoria. Spring forth! Oz, reveal thyself! अचीवमेंट्स में कुछ खुला है सुमेरु का। ट्रेजर हंटर ऑफ शिमरिंग वुड्स, ओपन अ टोटल 100 चेस्ट इन अविद्या फॉरेस्ट। हो गया 100 चेस्ट खोल डाले, मजाक कर रहे क्या। As one with wind and cloud!
कौन है कौन बच्चा? हाय ब्रो। Time to go. By royal decree. Scatter. थोड़ा सा जानबूझ के मैं थोड़े से ये बच्चों पे ट्राई कर रहा हूँ और थोड़े क्विकन एग्रेवेट वगैरह डेंडो रिएक्शन सही है ब्रो। डेंडो रिएक्शन अच्छे है, बहुत अच्छे मल्टीप्लायर वहाँ पे वो डेंड्रोक्यूलस सॉरी कहाँ है यार आना। कौन है कौन है? Wind strider. Propagate. अबे यार फिर नीचे मत गिर। इसका जुड़ना का भी कोई स्कीन है ना इसको जोड़ने? अरे फिर भी नहीं खुला। अच्छा वो करने से खुलेगा। ओके ओके गॉट यू ब्रो। हाय अनुभव वेलकम ब्रो वेलकम। हाउ आर यू टुडे? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। अरे आ गया एक नंबर भाई एक नंबर परफेक्ट काम किया आके। थोड़ा भाइयों के साथ मिलके खेले तो मजा ही अलग है। अच्छा उधर हाइट पे है। हाइट पे उधर से जाना पड़ेगा क्या इस पर से? अबे यार अनुभव हाँ क्वेस्ट में एक आइटम मिलेगा जिससे इसको जोड़ सकते हैं। हाँ वही इसलिए यार मैं अभी क्वेस्ट ही चालू करने वाला हूँ। एक बार आई विल गेट ओवर विथ इट डन एंड डस्टेड। क्वेस्ट निपटा डालते हैं जितनी होती है एटलीस्ट उतनी तो पूरा निपटा डालते हैं। उसके साथ साथ फिर बहुत सारी चीजें गेम में सेंस भी बनने लगती है। ठीक है तो वो पहले निपटा लेता हूँ अभी। उसके बाद फिर कैसा है कि वो निपटाने के बाद फिर दो चीजें साइमल्टेनियसली चलेगी। एक रहेगी कि कैरेक्टर के जो असेंशन पार्ट्स लग रहे असेंशन कैरेक्टर और आर्टिफैक्ट्स ये दो चीजें और फिर ये सब कलेक्ट करते करते कि तुम जो ये भी है एक्सप्लोरेशन भी करते जा रहे हो चेस्ट वगैरह ये सब का। एकदम मस्त भाई मैं भी एकदम मस्त कड़क। यार यहाँ पे कहीं बता रहा था मैं डेंड्रोक्यूलस। हाँ अच्छा यही वाला इसके लिए तो चढ़ा था यार मैं इसका हाइट पे। नहीं हो पाएगा यार ध्यान ही नहीं दिया मैंने। अच्छा ये खुल जाए ये नीचे उसके दिए ना यार रस्सी मैं भी क्या। Propagate. अरे वो तो आड़ा चले गया है। Scatter. यहाँ
ऐसे भी है क्या? ओके, ये करने से खुलेगा वो। यार गरम क्यों हो रहा है? भाई कल चिंचू आएगा, उसके लिए अभी से फार्म कर लिया है पूरा। क्या बात है, और क्या बात है। मेरे को इतना सही लग रहा ना कि लाइक ऐसे 5 स्टार वगैरह भी आ रहे हैं, बट तुम जैसा अकाउंट बिल्ड करने को देख रहे हो ना, वो बहुत सही चीज है। क्योंकि वाकई में वो चिंचू सच में बहुत ही अमेजिंग लाइक कैरेक्टर है टीम में बनाना उसको। अरे यार, ये मेरी सेंसिटिविटी कैसे एडजस्ट करूँ यार? 60 FPS तो कर दिया, बट ये इतना खराब हो गया। मुझे सभी थोड़ी थोड़ी कम करता हूँ। 60 FPS से फास्ट तो काफी हो गया। थैंक यू सो मच फॉर द लाइक ब्रो। ये थोड़ी थोड़ी कम ही कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ इसको। ये कैमरा है ना, तीन तीन छह छह थी ना, कर देंगे अगर लगातार। हाँ, मच बेटर, मच बेटर, डेफिनेटली मच बेटर भाई। अरे वो तो कर लिया था ना। हाँ, मच बेटर ब्रो। ये सेंसिटिविटी खुल गया। वो यार ऊपर है यार, ये पहाड़ पे चढ़ भी गए थे अच्छे से। मेरे को स्टैंडर्ड बैनर से 5 स्टार वेपन मिला, स्काईवर्ड ब्लेड। क्या बात कर रहा, रो रहा है तू क्यों मेरे भाई? 5 स्टार वेपन, वाओ यार, मेरे को तो कभी आज तक एक 5 स्टार वेपन नहीं मिला यार I ब्रो। created another universe and founded paradise. For I, Fischl, am the Prinzessin de... और मैंने कभी उस पे किया भी नहीं। वो टेलीपोर्ट भी खोलना है यार जैसे। Odd reveal! Ha! Come on! We can do it! Propagate! Fallen leaves, adorn my night!
Germinate! Wind Strider! इससे अच्छा डीलर क्या मोना मिल जाती। हाँ वो भी है, बट ठीक है ना, हो सकता है तेको मतलब इतने कैरेक्टर्स तेको यूज भी ना करता हो तो साइमल्टेनियसली, तो ठीक है ना। एक वेपन के साथ एक शायद एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर मैक्स अच्छे एक टीम जो बनाना है, तो उसमें एक वेपन के साथ ज्यादा पावरफुल एक प्लेयर हो जाएगा ना तेरा टीम का। अच्छा ही है, ठीक है, मतलब ऐसा मतलब बुरी बात नहीं है वो। यहाँ पे स्टामिना के ये दिए, क्या बोलेंगे इनको यार, नाम क्या दिया है इनका, वो भी होगा उसमें जाके देखेंगे बुक में। तो थैंक यू सो मच फॉर द लाइक ब्रो। 80 विशेस वेस्ट हो गई। अरे हाँ मैं समझ सकता हूँ दोस्त, मैं तो तेरे को बता तो रहा हूँ इतने दिनों से मेरा दर्द दिल का, बहुत ही बुरा दर्द। भाई परफेक्ट दिया उन्होंने वो फूल के स्टैमिना, एकदम एकदम ही परफेक्ट हुआ वो। वो तो है बेनेट के लिए बेस्ट वेपन है। हाँ मतलब वही है, अगर बेनेट टू यूज करता ही है ना मेरे ख्याल से, तो उसको ये और भी क्या है उसका मेन, ये क्या है उसका, लाइक स्टार्ट एनर्जी रिचार्ज है, ईएम है, क्या है। अबे यार इसके लिए ये लेना पड़ेगा क्या, ये आग लगाने का तो अलग ही नाटक है। एक्सप्लोसिव बैरल वगैरह रख देते बाजू में यार, उसको मार के ही चलेंगे ना, मिला है रास्ते में तो। अरे हाय कुलदीप ब्रो, अबिस रिसेट ना टुनाइट, यस यस यस, अबिस रिसेट, न्यू अबिस इज कमिंग, परफेक्ट। उसमें डीलक को बनाना है मेरे को। Worry. ये हो गया क्या रीसेट? नहीं बचा है, आज होगा, मतलब अब इसके साथ ही होगा ऐसा 5 घंटे में। हाँ टू नाइट ब्रो, यो 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 यो। पायरो और इलेक्ट्रो डैमेज बोनस 75% से मिलेगा, ये आ रहा है। तो डेंड्रो के साथ जो इलेक्ट्रो है, क्विकन टीम्स वगैरह, ये बहुत सही हो सकती है। और दूसरा पायरो के साथ भी है, मतलब डेंड्रो ऐसा यूज करना चाहिए, इसमें ज्यादा ये देखने मिलेगा ओवरऑल कम्युनिटी में, ऐसा मेरे को लगता है। नहीं निकले उतने प्राइमोस निकाल लो। क्या क्या इसमें अपने The well-being of my इसमें retinue during ग्रेवन my इनोसेंस impromptu में कि absence. I'm नॉर्मली sure the चेस्ट good में people of the एक्सप्लोरिंग Adventurers एडवेंचर Guild are में। absolutely fine, main Fräulein. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, am the Prinzessin de हम्म, अरे वो अंदर है क्या एकदम टनल में, ये वाला टेलीपोर्ट। चल इसको निपटा ही चलते हैं। Outrider Amber. रात को रिसेट होने से पहले कर लो। क्या क्या कर लूं?
threads of your fate lie in. कैसा रहेगा रे? खूंखार रहेगा क्या ये? कुछ छूट क्यों नहीं रहा बे यार? और एक बार देखे यार, हट। पहले क्यों नहीं बताते रे? अबिस कर लो, अबिस अभी के अभी। ब्रो कर तो मैं लूंगा, बट जितना मैं मेरे लेवल के हिसाब से मैं पुश कर सकता था उतना कर लिया है मैंने वो। अभी मेरे को थोड़ा अपग्रेड होके जाना पड़ेगा वापस, तो नेक्स्ट अबिस के लिए फिर रेडी करना पड़ेगा मेरे को, ऐसा है। Outrider Amber, report. एक और ट्राई करो। ठीक है ठीक है, अभी करता हूँ ना, अभी करता हूँ। अभी हूँ मैं 2-3-4 घंटा बैठूंगा, 2-3 घंटा बैठूंगा। टेंशन नहीं, अबिस भी करता हूँ और स्टोरी क्वेस्ट भी करता हूँ, एक्सप्लोरेशन भी करता हूँ। थोड़ा 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 सब करके हो जाता हूँ। The threads of your fate. अच्छा ये वाला है क्या ये? दंडों के लिए क्या चाहिए? Wings of darkness, come. Propagate! As one with wind and cloud! Fine. Let's dance. Heights. By royal decree. Fallen leaves, adorn my night! 1 मिनट है, बस वो निकट ही गया रूइन हंटर। नेक्स्ट के लिए कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग करो। हाँ हाँ, मतलब वही उसके देखना पड़ेगा ना क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वही तो है। इसलिए मेरे को ये मैं नहीं मानता ना कि ऐसे दूर कैरेक्टर में इन्वेस्ट करो, ऐसा नहीं होता। तुमको स्पाइरल अबिस हर बार अगर पुश करना है, जो कि करना ही चाहिए, वही तुम्हारी अकाउंट की रियल टेस्ट है, तो फिर तुमको थोड़ा थोड़ा सब करना पड़ेगा उसके हिसाब से, मतलब प्रॉपर फन के लिए। अबे यार ये टेलीपोर्ट इधर है, क्यूलस। क्या होता रहेगा? हाँ वही वही वही, एग्जैक्टली। Follow the wind. सही बात है। ये चेस्ट, अच्छा उसको मारने की चेस्ट, ये जहाँ पे ये है ना रजिस्वाइन, तो रजिस्वाइन को ही मार देगा। उसको ढूंढूंगा तो टेलीपोर्ट मिल जाएगा शायद। फनन वनन से है ना रास्ता कहीं से। ट्राई योर बेस्ट एवरी टाइम टू गेट मैक्स पॉसिबल प्रीमोज। ऑफ कोर्स, मतलब और भी चीजें मिलती है ना उसके साथ वैसे भी, तो करना ही चाहिए। वो तो करना ही है ना, वो तो गेम का कंटेंट है, वो तो तुमको करना ही चाहिए, उसी की तरफ बढ़ना चाहिए। और तुमको कहीं ना कहीं तुमको 4 अच्छे मेन कैरेक्टर बनाना पड़ेगा। 2 सपोर्ट भी रहे तो चलता, सॉरी 4 सपोर्ट भी रहे तो चलता, पर दो टीम बनानी पड़ेगी ब्रो। 2 टीम्स बनानी पड़ेगी तुमको, सवाल ही नहीं होता। ये मिल गया वो टनल, तो 4 उसमें अच्छे हो ना, दोनों एक साइड पे सपोर्ट भी 2 पकड़ के चले थे जो एकदम ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ऑफ फील्ड अपना ऑफ फील्ड कैरेक्टर जो अच्छा खासा दे रहे हैं।
शांति में एक बार कभी नहीं मारा मैंने और अनुभव नहीं मारे थे इसके साथ में। Time to go. तो पहली बार अकेले ऐसे फेस कर रहा हूँ। ठीक है। So where is it? That hurt. अच्छा इसको फोड़ना पड़ता है ना? Wind strike. हाँ। बचा। इसको ये तो आया ही नहीं अभी One आया। with wind and cloud. यार थोड़ा गलत हो गया यार। I'll protect us. ये थोड़ा गलत हो गया। Propagate. ये फायर से जल्दी जाता था ना ये। करो ये। करोला तो टूट ही नहीं रहा। Midnight Phantasmagoria. Let's dance. क्या क्या अचीवमेंट Adorn मिला? my night. Fine. अच्छा वो इलेक्ट्रो कुछ तो उसको छोड़ा था ना वो वापस ये करना था वो छोड़ना था वापस। गिरा क्या? बहुत Propagate. गलत टाइम पे गिरा यार। Odds reveal बाद में मर thyself. गई। Wind strike. कुछ तो अचीवमेंट अनलॉक हुआ पर। बहुत गलत टाइप से नॉक हुआ यार वो। कहीं का ये ब्रो व्हाट इज अप मेरे भाई क्या बोलते? तुमसे मरी तो नहीं बाहर जा। हाँ ये। उसको इलेक्ट्रो ही दे रहा हूँ। Goodness gracious, no. A little weak. Goodness gracious. Birds call. एक मिनट। पायरो क्रायो और डेंड्रो यूज करो। हाँ वही पायरो ये क्रायो ले लेना था डियोना वगैरह ले लेना था। आयाका बस्ता हाँ मतलब भाई वो एक आयाका है तो बहुत पावरफुल ऊपर के लेवल पे। Propagate. Wings of darkness. Come, sever night from Springboard. As one with wind and cloud. इससे भी निपट ही जाता रे क्विकन वगैरह। क्विकन भाई सब डेंडो रिएक्शन बहुत माल है क्योंकि गेम रिएक्शन के सेंस में भी आगे बढ़ रहा है ना। तो अभी उसके साथ भी एक्सपेरिमेंट करना और आगे और फॉर्मुलेट करेंगे लोग और उसके साथ अलग अलग कुछ करेंगे। मतलब टीम्स के सेंस में मतलब रहेंगे तो उतने ही रिएक्शंस जैसे लाइक यू नो हाइपर ब्लूम और बर्जिन वगैरह। अबे ये तो लिया ही नहीं इसको मैंने। फालतू। Yuna is good enough for Ganyu, and Ganyu is pretty useful off field also. Yes, yeah. Like 5-star characters जो रहते हैं उसमें
उनमें उनकी स्पेशल एबिलिटी ही तो रहती है मेन। Time to go. ये अनुभव के इसमें खोला था ये टेलीपोर्ट, इससे मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये खोल लिया होगा करके। अबे उसका भी आवाज आया था यार कहीं तो, डेंड्रोक्यूलस का। ये अनडिस्कवर्ड है, ये थोड़ा एरिया अनडिस्कवर्ड है। हाय दीपक, वेलकम ब्रो, हाउ आर यू टुडे? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन ब्रो, एंड थैंक यू सो मच फॉर द लाइक्स ब्रो। Time to go. अच्छा ये तो वो है यार, ये वो पानी वाला है, ये बाद में होगा। ये बच्चा है, निपटा डालते हो। मस्त मस्त मस्त, गुड ब्रो। क्या बोलते, क्या प्रोग्रेस जेंशिन में? अभी मैं एक आध स्ट्रीम करने वाला हूँ Follow the ब्रो, wind. लंबी वाली, मतलब 15-20 घंटे, 24 आवर स्ट्रीम ऐसा कर सकते। एक हाथ सैटरडे को चालू करूंगा, सीधा संडे को खत्म करूंगा। कहाँ है, कौन है इसका मालिक? तुम हो क्या? Looking for trouble? तुम हो काका? Go, Barbara, go! ये कौन है रे, कौन है कौन है कौन है? इससे दूर दूर क्यों हो तुम लोग? Fallen leaves, adorn my night. One with nature. I'll be back. थोड़ा कैमरा सेंसिटिविटी भी घुस गई पर उसमें थोड़ी, ये लुक वाली वो एडजस्ट करने में। हेलो कुछ तो दो मेरे को, वो रस्सी वस्सी बारकोड अब दिया है। Where do you think you're? Scatter! By royal decree! Let the show begin. Hi? जोंगली हो ही बिल्ड कर रहा हूँ अभी। ओके ओके ओके, नाइस नाइस नाइस। अभी थोड़ा स्टोरी में निपटाता हूँ, क्वेस्ट निपटा लेता हूँ ये वीक में। और भी यार बहुत बैकलॉग हो गया है मेरा, साथ साथ में स्ट्रीमिंग करने की वजह से। I'm thankful so much for the likes. Dendro reactions are okay, but I still like melt wap reactions, easy to use and high damage. Yeah. I mean, like it's a new reaction. That's what I meant by that thing that I said. It's kind of a new reaction, so it is fun to experiment with it. You know, the sub reactions as well. That was what I was saying. And then it has its limitations, right? It has its limitations. So you have to, you will find value in new characters, right? You will find value in new characters. You can build them as well. And maybe, you know, now some of the spiral abyss would have, like, you know, some dendro challenges in them. Like, you know, now
just Time to like go. pyro damage increased by 75% and all this. तो ऐसे इनको क्यों मार रहा हूँ मैं यार? नहीं मारना। Wind Strider. और इससे खत्म क्यों चल रहे थे? I'll protect एकदम ही। us. Huh. Oh, repeat the... अरे Wind Strider. Let's dance. ये मिंट गलत मिंट है। By अरे royal यार decree. इनको कितनों को मारते बैठो Go, अब Barbara, ऐसा। go. Wind Strider. बट कभी कभी इनमें से भी चेस्ट वेस्ट निकल जाती भाई, कुछ बोल नहीं सकते। जेंशिन का। Ready, steady, go. Let the show बारबरा और begin. पीछी रहे तो मैं मौत के मुंह से भी वापस आ सकता हूँ रे भाई, हेल्थ के मामले में। स्टोरी होती रहेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे अभी मैं बता रहा हूँ ना तेको, जब मैं स्ट्रीम करने के पहले मैंने इतना गंदा पुश मारा उसको कि वो मेरे को पता है कि वो जो मेरे जो अकाउंट की कमजोरी है कहीं कैरेक्टर लाइक ऐसे क्लस्टर करने वाले नहीं मिल रहे थे मेरे को। तो मैंने बहुत ट्राई किया ये सीजन मैंने अभी ये वाला वैसे ही मेरे को पता है ना, थोड़ा कुछ चीजें ना मेरे को मेरे कैरेक्टर्स को एक और लेवल जैसे जैसे इत्तो को और अपना काजुआ को लेवल 90 करके ट्रैवलर के साथ ऐसा लेके जाके और डेंड्रो रिएक्शन के साथ करना पड़ेगा। हाँ मतलब अभी कर सकता मैं एक बार ट्राई तेरे सामने, मतलब वैसे मेरे को स्पाइरल अभी खेलना ही था कि यार क्यों जा रहा हूँ अभी मैं यार। Time to go. ये क्या है? ये अच्छा ये है क्या? ऐसे क्या बैठे हैं रे? हाँ? New punching. Germinate! Midnight Phantasmagoria. Clouds high. The birds call. Wind Strider. वो देखना क्या है, वो एग्रेवेट और वो क्विकन वो चल ही रहा है, ये चल ही रहा है क्योंकि इलेक्ट्रो ट्रिगर हो रहा है तो उसमें डेंड्रो फिर ट्रिगर हो ही रहा है काजुआ के अनीमो में। तो वो चीज है, अनीमो भी मतलब एकदम पीछे नहीं रह गया कि कुछ यूज ही नहीं है, जैसे कहीं ना कहीं वो यूज हो रहा है, डेंड्रो के साथ नहीं है उसका फिर भी हो रहा है। और ये जो काजुआ काम करता ना यार कि एक जगह पे जमा कर देता है, ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत ही उम्दा। वो भी नहीं मिल रहा था, वो भी देखने तो गया था पर वो मिल नहीं रहा था ये वाला। ये जो है अभी सभी खोलेंगे अपन। स्टोरी तो होते रहेगी यार, वो तो सही बात है, स्टोरी भी करना है यार। वो क्या है फिर एक बार वो हो गया ना तो एक्सप्लोरेशन में बहुत चीजें सेंस बनती है। अबे यार वो एक निकल ही गया, आ गया ठीक है Adorn my night. Scatter! You are not welcome here. Wings of darkness. Come, sever night from day. अब इसके साथ एक बार डेंड्रो रख के भी मैं एक एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। कॉली जैसे कॉली C3 हो गई है तो उसको भी देख सकते हैं डेफिनेटली। Let's dance. As one with wind and cloud. Wind Strider.
कहाँ? कौन? कैसे? किसको? डिफीट ऑल अपोनेंट? अच्छा ये यहाँ पे है क्या? Welcome, welcome. Odd reveal by Into the wind. Propagate. I'm again. Never tested my patience. अरे मैं इसको ना अभी अभी इसको ये ट्रैवलर को मैं ये देता हूँ, फमोनियस वाली वेपन देता हूँ। Time to go. इसको बहुत ही ईआर की गरज है, Wind strike. डेंड्रो ट्रैवलर को। फ्लोर 9 और 10 के लिए कैरेक्टर्स बिल्ड नहीं चाहिए। हाँ हाँ, मतलब वही तो, इसलिए तो कर पाया मैं, बट 10 में भी फुल 3 स्टार्स नहीं लाया मैंने। 11 और 12 के बिल्ड चाहिए। बिल्ड भाई मेरे को ऐसा लगता है 9 और 10 के लिए भी चाहिए, ऐसा नहीं है 9 और 10 के लिए नहीं चाहिए। 9 और 10 के लिए भी बिल्ड चाहिए तुमको। अब इसमें तुमको थोड़ा चैलेंज करना। देख अभी कैसा है, तुम एक स्टैंडर्ड में पहुंच गए, उसके बाद फिर मैटर देख सकते तुम, क्योंकि तुम्हारे पास एक सेट तो है जो बना हुआ है, अगर तुम 12-3 क्लियर कर रहे हो तो ठीक है। बट अभी जैसे मैं सिर्फ 2 महीने से खेल रहा हूँ, 2-3 महीने से खेल रहा हूँ, तो मेरा बहुत अभी रास्ते में है चीजें। मैं एडवेंचर रैंक 54 पे हूँ, ठीक है। तो मतलब जो ऊपर ऊपर वाले रैंक है उसके कंपैरिजन में पीछे हूँ, मतलब होंगे मेरे भी पीछे लोग, ऐसा नहीं बोल रहा, बट फिर भी तो तुमको हाँ हाँ थोड़े ऐसे 70 प्लस वगैरह चाहिए, और थोड़ा तुम्हारी स्ट्रैटेजी भी चाहिए, उसके बिना नहीं होता। जैसा मैं फ्लोर 9-10 ही मेरे लेवल को ये दे रहा था वो, मेरे इसको टक्कर देता। फ्लोर 9 के भी 2 स्टार नहीं हुए मेरे, 9 में से 7 ही हुए। उसमें क्या है, एक टीम मेरी थोड़ी सी कच्ची पड़ जाती है, और काजू वाली टीम तो एकदम सन्नाट, एकदम खत्म कर देती थी फट से एकदम। बट जो दूसरी टीम है ना, उसमें ये हो जाता है, उसमें थोड़ा सा नहीं हो पाता है। उसको ट्राई भी किया मैंने काजुआ को वो चेम्बर में रखने का, बट वो नहीं हुआ वो मैंने ट्राई बहुत बार किया वो, ये सीजन वाला। और ये है कि खत्म हो गई है, खत्म हो गई। चलो 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 बाबा चलो, ये तो अभी खुलेगा रात में। ये खत्म, ये खत्म, ये खुलेगा। फोटो ले लूं, फोटो फोटो। और इसका और एक वो खुला क्या, डिस्प्लेएबल, और ग्रेवन इनोसेंस का। फिर ग्रेवन इनोसेंस का पूरा ही रैप अप हो गया ना, फिर कहीं और चलेंगे। स्ट्रैटेजी इज मोर इम्पोर्टेंट, एग्जैक्टली ब्रो, वो तो है। कब कोई ऐसे वीडियोस आते हैं ना जिसमें AR-25 पे वगैरह ही 12-3 वगैरह क्रैक किए, फिर कैसे किए उन्होंने? वो तो स्ट्रैटेजी ही है ना ब्रो, उसमें और भी कुछ होगा। जैसे रीरोल करके एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स लाके स्ट्रॉन्ग बना के उसको कर रहे, उसी में इन्वेस्ट कर रहे, ट्रैवलर पे नहीं लगा रहे, किसी पे नहीं लगा रहे, तो वो भी फिर भी वो भी करना डिफिकल्ट ही रहेगा, डिफिकल्ट ही रहेगा ब्रो। वो डिस्प्ले भी खुलने का होगा फिर, डिस्प्ले वाला। हाँ है क्या? बे ऊपर Time to go. भाई, ऐसा मल्टी स्टोरी क्या बनाया है बाकी। और एक लगा सकते ना। Please let me know if you decide you want to.
तो पिंक पिंक ले लेते एक। ये पिंक पिंक ले लेते। कर लेगा कैरी, हाँ वही वही वही, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, परफेक्ट पकड़ा तूने कि जो है डीलक को मैं बनाऊंगा अभी पायरो में, उसमें बनाऊंगा फिर मैं उसको अच्छी से देख के आराम से स्पाइरल अबिस के लिए, और वो बना के पूरा फिर ऐसी 2 टीम बनाऊंगा। गाजुआ के साथ सिर्फ एक शील्ड और एक हीलर, और डियोना भी मेरी C4 हो गई है, तो मैं तो उसको बनाऊंगा ही बनाऊंगा, बनाऊंगा ही बनाऊंगा। बहुत सही है वो, तुम उसके साथ एक वाटर डाल दो, बहुत ही अमेजिंग तुम्हारी फ्रीज टीम हो जाएगी। और उसके साथ अगर तुम डेंड्रो ट्रैवलर रखते हो तो वो भी बहुत सही टीम हो जाएगी, क्योंकि फ्रीज, डेंड्रो और डेंड्रो के और फ्रीज में क्या होगा ना, बहुत 3-4 डेंड्रो कोर्स जमा होंगे वहां पे, तो वो एओई डैमेज बहुत बड़ा होगा। तो जो ग्रुपिंग्स है ना, वो खत्म करने के लिए तो बहुत सही रहेगा वो वैसी टाइप की टीम, तो वैसा कर सकते। अभी मेरे को तो C4 ये बन गई है डियोना, तो वो एक अच्छा है ने, जो ऐसा एकदम मीटा में नहीं चल रही, कुछ ऐसा ऑफ टीम रहनी चाहिए ना, कुछ ऐसी अलग थलग कड़क। ये लिया क्या मैंने? पिंक हेड हो, पिंक हेड बूहू, पिंक हेड पिंक हेड हे पे अपन फिर भी बहुत बच रहे हैं। केप नहीं हुआ। मेटामॉर्फोसिस अनलॉक्स इन 1 डे। हाँ तो तब तब वो हो गया। इनफैक्ट और एक लगा सकते हैं। हाँ मतलब मैक्सिमम लिमिट अभी रीच हो गई है। ओके ऑलराइट। इधर के 3 बच्चे हैं। अभी सबसे बेस्ट तो है क्वेस्ट खेली जाए जरा। आर्कन क्वेस्ट खेली है जरा यार। क्या है, चल क्या रहा है? Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade, it is the last link I have to the land of my birth. Welcome, welcome. How can I help you two? Hi there. We would like to ask you a question. Do students from the academia ever come to Port Ormos? Of course, especially around this time of year. Students from SUMERU City that are about to graduate often come to Port Ormos to cut loose a little.
Many people often talk about how hard it is to get accepted into the academia, let alone graduate. But those who finish their studies and go on to become full-time researchers at the academia have it even harder. Sure, we may not be SUMERU City, but Port Ormos offers beautiful scenery and a stress-free environment. Some even say it's good luck to come to Port Ormos, so students and researchers come flocking here when things get to be too much at the academia. Ah, you see over there? Those are students from the academia. They've been looking worried and miserable ever since they got here a few days ago. If you ask me, the life of a merchant is better. So long as the Akasha teaches us what we need, then life is good. Those students seem to be discussing something. Let's see if we can listen in. Out of all my commissions, I enjoy making jewelry. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. Ah, Time to go. It's no good. I've tried asking around, but I haven't been able to learn anything useful. Not to mention that a bunch of scary-looking Eremite mercenaries have been posted along the streets now. There's been a lot of fighting between the different Eremite factions in Port Ormos. If we choose to move on our own, then it would be wise to steer clear of them. Especially the group that's constantly shouting some stuff about the Scarlet King and some resurrection. I've even heard that the Citadel of Regzar is starting to get fed up with them. What was that group called again? Ein something or other? They're called Ein El Akhmar. Today, I heard that the thing we're after... Wait, come again? Don't you see? Many of the Eremites in Port Ormos deal with trading this kind of... They're usually pretty wary of outsiders, but not so with students of the academia. It's because the kind of goods that students are looking for aren't the kind of goods that... I've heard that Ein El Akhmar likes to set up shop at the Jafar Tavern. Supposedly, if you're willing to part with 500,000 Mora, they'll give you info on anything. Wait, did you say 500,000? If information alone costs that much, then how... I wouldn't worry too much. Our field of research is very niche. Oh, I guess that makes sense. Whoa! Did you hear that? A niche field of research and shady knowledge? It all sounds pretty suspicious to Paimon. Is knowledge something people just buy and sell like that? So, what's your plan? Wait, didn't you hear what they just said? Buying information is going to cost us 500,000 Mora! Have you lost your mind? Oh, all right. Paimon never thought... oh, okay. Knowledge की तस्करी. He will pay the price one day. What? Lower. It's just an adventure. Maybe this way? Time to go. This is the place we heard those students talking about. Let's find a seat somewhere and see if we can spot the group they mentioned. Oh, you've arrived. Please take a seat.
So, they think that they can go toe-to-toe with the boss? Ha! Once we reclaim the power of the Scarlet King, they'll be the first that the boss They're nothing to be afraid of. Our main rival now is the Caracal Battalion. They've also amassed a significant amount of Mora this time, so we mustn't underestimate. How can the Caracal Battalion compete with the boss when they're nothing but a bunch of money-grubbing opportunists? Yeah. Huh. All these... Greater Lord Ruka Devata. That traitor and her followers must not be spared. The day will come when the Scarlet King exacts vengeance on SUMERU, and all of them shall be punished. Yeah. What you see is what we should. What's going on? Welcome. How can there be Kainaki here? Why does it have to be? Huh? Who are you? What do you want? A traveler? Now's probably not the time to talk about that. Didn't the students say Eremites are wary of outsiders? A student? What's a student from SUMERU City doing in Port Ormos? Ah, well, if it's info you want, you've come to the right place. The question is, can you afford it? Huh? What is this, some kind of joke? 50 million Mora. Sorry, he must have grabbed the wrong amount. Hey, what do you think you're doing? नहीं 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 मेरे को नहीं देना है. Oh, Paimon can't stand to see so much more go. Exactly. There's no other choice right now. Here, this is the merchant's address. Whatever you're looking for, you'll find it there. Hmm? Well, what are you waiting for? Oh, that's right. We heard you mention the Scarlet King just now. We're actually interested to know more because we're archaeology students. Fine. Since you've already handed over the Mora, I guess I can throw in a little extra info. As you can see, members of Ain al-Ahmar are devout believers of the Scarlet King. Years ago, the Scarlet King founded the great desert nation that was our homeland. It was an advanced civilization, far beyond anything you'll see in present-day SUMERU. The Scarlet King was the rightful god of wisdom, but he was So, you mean... Greater Lord Ruka. Furthermore, she conspired with the Academia to cover up the truth of her actions, and create the merciful and benevolent facade for which she is now known. Ugh, just thinking about it. But the story doesn't end there. Oh no. Mark my words, our god shall return. And when that day comes, all followers of the traitor and all the desert dwellers who have forgotten their true god will suffer retribution. If what I'm saying makes you shiver with fear, it might not be too late for you to become a believer of the Scarlet King. I don't have anything to say to you Academia people about that. I think this conversation has reached its end. Not just yet. This man is a fraud. Huh? Oh. You again? Deranged Academia lunatic. Yes, it's me again. मैं बोला ही यार, I already हैतम का warned you that नाम if you लिया weren't किया. willing to sit and discuss things with me, I'd take measures to make things uncomfortable for you. Listen to me. That address he gave you is fake. Or at least, you won't find a merchant waiting for you there. This group has been boasting all around that they can provide information on a certain item. Once you show up, they keep up the act until they have hard evidence that you want to purchase said item. Then they use that to squeeze you for all the Mora you're worth. Hey! Shut it all, Hatham! What are you playing at, trying to ruin our business like this, hmm? I told you the other day. I wish to discuss my terms with your boss. Ha! The boss made it perfectly clear that he would. Yes, and in no uncertain terms. But that was then. It does not preclude him from changing his mind in the future. I'm warning you. Don't push us, or this could get ugly. We don't usually get rough with people from the Academia because it just complicates Welcome things. to the stream. For a lunatic like you, though, we might just have to make an exception. If you're suggesting that we escalate this from a verbal exchange to a physical one,
I accept. After all, even the Do you also Archons used play war to Genshin? negotiate the ownership of Tevat. If, on the other hand, we can't agree on any means of negotiation at all, अच्छा then I'm afraid my Thank you next course so of much action यार will sting a little YP more for than the mere joining falling in. through of a few Thank business you so deals. much. I will jeopardize This the also Eremite's means a lot. reputation, which I know you value above all else. I am quite also. और बता Did you say? Consider this. You had me. Have I Okay, I'll ever give it failed to to you. I'll follow give through it on to my... you. This For a guy is bit, really for a out bit of his there. mind. पता ही था मेरे को. Okay then. If you really have a death wish, let's meet a week from today. The pier in front of the Pharos Lighthouse, 4 o'clock in the afternoon, sharp. Don't expect us to hold back. Al Haitham का Not so ट्रायल तो नहीं दे fast. देंगे अभी. First, you return the 500,000 more to them. हाँ. चल. Please, I beg you, don't provoke them. We can't afford any trouble with this crowd. They haven't even paid for their food. Ah, Mr. Iman. Well... Someone who chooses to do business with a group like that really can't afford to get so flustered the instant someone confronts them about it. Consider the meal compensation for our silence. I'd say you're getting an excellent deal. Whoa, did you see that? He not only got us our Mora back, but sent the Emirites running too. Plus, he seems to know a lot about what's going on around here. Let's... He went that way! After him! So Al Haitham, this is how his role will develop. Okay, cool. Al Haitham, right? Al Haitham. Al Haitham. What do you want? साले टांग खींच रहा है मेरी. Al Haitham or Dendro Daddy. Thank you much No for need your for help. thanks. My goal was to get to them, and you two gave me just the ठीक opportunity I है, needed. गरम मत कर. We're even. Oh, I advise you to... All right. Goodbye. Hold your horses! We still have something to ask you about! Since you tore through their scam right in front of them, you must know the real story about Who exactly are you two? And why are you inquiring about that? A student. Right. Look, you should know that those thugs conducting business with you had nothing to do with your lie. At least. Huh? Oh, yeah! He doesn't even have a vision. Maybe not, but he can still use elemental energy. Otherwise, there's no way we'd go asking for info from those high-headed thugs are definitely gonna bring a lot of backup for your next meeting. Even if you don't go alone, you won't regret taking us with you. All right. I accept. Got a pen and paper? If you're searching for someone who sells that kind of merchandise, I'll give you one of their addresses, and you can try your luck. Yes, We'll reconvene at the appointed time by the pier. Perfect. It doesn't matter if you show up or not. Thank you so much. How are you today? How have you This been? merchant's information. Are you are done this Exactly what we're after? daily commissions you guys are doing क्या of You were SUMERU? willing to part I'm with still doing 500,000 Inazuma. more अब भी for मैं something change and करता you हूँ. didn't थोड़ा even know SUMERU what it के was? explore तो करे यार कैसे? Okay, look, if you've been making मैं बोला यार ये खत्म कर देता हूँ story. Somehow, and that फिर not only do exploration ही the बचता है. Eremites deal in it. You know, all this is what you've been looking for. Oh. Paimon can't tell what it is. It looks like some kind of ornament. अच्छा ये कुछ This और is a knowledge capsule. मैं To put I it am also simply, very good it's a bro. vessel Thank that you can so store a much. fixed quantity of canned knowledge. It's like a miniature Akasha. Anyone who links it to their personal Akasha terminal instantly becomes privy to its contents. Correct. Anyone. Unlike the Akasha,
which heavily regulates who can access what information. Knowledge capsules confer their contents without any requisites. अच्छा, That's capsules there are many, amazing. right? That's amazing. It's essentially a convenient and harmless vestibule for knowledge. Unfortunately, it's illegal in SUMERU to privately possess or trade them. They were created as a means for scholars to transfer bro, knowledge full gained from किए क्या Ermin इससे Soul में कोई? into the Akasha. But despite strict regulations, some of these knowledge capsules will always escape destruction. After all, there will always be those in this world who are dissatisfied with life as designed for them by the Akasha and wish to change their fate. Over the past century, a wide variety of canned knowledge has been leaked from the academia. Now, in Port Ormos, the valuable ones are a means to Mora for the Eremites. Meanwhile, those which the Eremites deem to be useless to them occasionally prove useful to the common citizens and hapless academia students. Well, I think that about sums it up. Knowledge capsule. So that's your true objective. With our current arrangement, I don't believe I can offer an answer. You're still resolved. Fine. Let's talk somewhere with fewer people. Fresh fruits and vegetables, both quantity and quality. Thank you so much for the likes, yeah, guys. Thank you so much. Oh, is that Time a to get precious? A fateful offering. Follow the wind. Let's continue our conversation here. If you wish to learn more about the knowledge capsule that the Academia lost, then you must help me with something. I need you to find someone named Dory, a traveling merchant. Unlike the peddlers who hawk inferior knowledge capsules, she often has quality goods in stock. Okay. Some say that as long as there is profit to be made, there is nothing she won't dare to... She's guarded against people from the Academia because most of her wares don't comply with Academia regulation. I think she blacklisted me. I met with her informant, but it soon became clear that they had no intention of letting me get any further. Become one of Dory's customers and earn her trust. This is my condition for further collaboration. Why do you want us to meet with her? Until you complete this task, you don't have question privileges. और क्या है? दूसरे कान में भाई. So how do we go about doing? You two are outlanders who haven't been here for long. Beyond the password, though, I have no way... This is kind of nerve-wracking. The true challenge begins after you meet her. She has a keen nose for Mora and a shrewd eye for wares, and she only likes I'll prepare some funds for you. Buy her highest quality wares and earn her approval. But we only just saw a knowledge capsule for the first time. We don't know how to tell which ones are good and which ones are bad. Is that something we can learn quickly? That's true. Have you two heard of elemental sight? Oh? That's a surprise. Guess I'll have to hold you in higher regard. Anyway, that ability should resolve your issue. Okay. Here are 2 knowledge capsules. Tell me, can you detect any difference in their quality? They look... Try inspecting them with elemental sight. How'd it go? Did you see anything? Rumor has it that higher quality knowledge capsules generally appear brighter when viewed through element. That's because knowledge originates from Irminsul, the root of Dendro power itself. The more powerful the knowledge, however, some canned knowledge with a high... Using elemental sight is merely... That sounds pretty impressive. Here's a sheet with the informant's location and contact password, and here's the more... Don't be cheap. You'll need to spend to catch Dory's eye. If there's any more left over... Oh, and be sure to exercise some caution. There have been Matra present in Port Ormos.
Matra? They belong to the Academia's regulatory body. They also handle cases of illegal canned knowledge transactions. Like I said, the Academia has banned both their trade and possession. The Matra are razor sharp. You're in for nothing good if they lock their sights onto you. If you two want to back out, now's the time. Okay, then we have a deal. If you succeed in your dealings with Dory, come find me at the Wikella Funduk. We'll have an open discussion then. Looking at what Al-Haytham wrote, Dory's informant is a traitor near Old Ormos. Let's follow these instructions and try to get in contact with him. आर्कन क्वेस्ट कर रहे हो? हाँ हाँ, आर्कन क्वेस्ट यार करना चाहिए ना। बहुत मतलब क्या है, कितनी रहेगी? ज्यादा देर की नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी जल्दी। आर्कन क्वेस्ट निपटा लेना चाहिए ना एक बार, जितनी होती है उतनी एटलीस्ट। क्योंकि अभी इवेंट हो गया, आर्कन क्वेस्ट भी क्लियर हो गई, तो फिर वर्ल्ड क्वेस्ट और वर्ल्ड क्वेस्ट के साथ साथ फिर एक्सप्लोरेशन एक साथ ही होते रहता ना, और स्पाइरल अबिस, फिर बचता ही क्या है। अरे यार ये अपन ने पढ़ा नहीं। Are you sure you're remembering that right? Hyman doesn't think it was that on the paper. What a unique Following the paper got us past the first round. Ronak, these two want to buy unripe horror fruits. Show them to the warehouse. Ronak. Got it. You two, please follow me. You two have a fascinating fashion sense. We haven't seen a customer wearing a SUMERU rose for quite some time. Hold on. Let me think. SUMERU rose means common merch. No. Look again. We're obviously wearing morning flowers. चलने जल्दी। My mistake. I do मेरे को apologize. 5-6 घंटे लगे थे आर्कन क्वेस्ट में। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, तो बहुत टाइम है मैंने। बट मैंने काफी उस दिन बैठ के The देखा था warehouse ना is up काफी सारा। ahead. Please follow me. तो थोड़ा थोड़ा करके ही देख रहा हूँ मैं, जब तक होगा। जब अगर नहीं होगा बीच में बंद करके अपना खेलना शुरू कर देना स्पाइरल अबिस वगैरह के लिए। Before I retrieve your products, I need to confirm a few. Please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Earlier, many of our hara fruits were taken by mice. Hold on. That's not right. Take it. I'm sorry. But as things currently stand... He's cautious of us. Let's take a closer look at the paper that Al-Haytham gave us. सुना क्यों नहीं? ठीक है। Before I retrieve your product, please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Earlier, many of our hara fruits were taken by mice. Thanks. If better goods come in, you'll be the first to know. You look like you have some skill. Why don't I pick out some fruits that'll make you dizzy? ये तो मतलब कोई ऐसे ये अपना बाहुबली जैसी कोई साउथ इंडियन मूवी बनी तो ऐसा ले सकते हो ये म्यूजिक को। अबे यार ये No, that's not it. The paper said that heat stroke is... हर बार गलत कर रहा हूँ। Cautious of us. Let's take a अच्छा ये कोई और Before I retrieve your products, I need to confirm. Please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Earlier, many of our hara fruits were taken by... That you look like you have some skill. Why don't I pick out some fruits that'll make you dizzy? Yep, that's the right answer. But eating hara fruit that makes your head and ears ring
sounds like a bad life. Would you like your horror fruits to be packaged in the SUMERU city or Port Ormos style? Wow, you two sure are generous customers. We'll be sure to package your products. Okay. Everything has been confirmed. Miss Dory is waiting for you up at... Shoot! It's the Matra! Run! What? The Matra? Where? Oh, Hatham said we're done for if they catch us. We gotta get out of here. We don't know this area, so let's follow that informant. Higher? Time to go. Time to go. He ran that way. Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade, it is the last link I have to the land of my birth. Time to go. Look, he's over there. Time to go. If you're hiding from the Rishbalan tiger, come this way. Another password. Huh? Oh, that voice came from behind the building on the right. डोरी को मिलने के लिए इतना You can stop running now. So you were the one who was calling out to us just now. But, are we definitely gonna be safe? These two good customers wish to buy some horror fruit, Miss Dory. And if there's nothing else, I'll just excuse myself. Oh, very good. Huh? Wait, you're Dory? I'm unsure. Hey, what are you trying to say, Princess Pea-Brain? I can be scary enough when I need to be, believe you me. But it seems you two have actually done pretty well so far. Not only did you manage to find the... बहुत मुश्किल से मिलना था डोरी को I can't risk doing business with people who start huffing and puffing after just a few paces. No matter how much. So that's why I prefer to have customers like you. It's your first time here, but don't worry, I won't ask too many questions. Even if you wish to buy enough knowledge capsules to decorate your house with, please, as long as you have lots of round, shiny Mora, then we're all good. Ah, yes! Wow, she has a trove of canned knowledge. Whew. She'd probably be in serious trouble if the Matra comes. What kind of products do you seek, my dear customers? Don't worry, I'm not interested. Take this one, for example. An analysis of the sociological ideology and dialectics of the Hiliturals. Only 3 people in all of Teyvat have ever studied it, making it extremely rare. It's on sale now for 350,000 Mora. मजा नहीं आएगा इसमें. Who would want to be hoता है. How about the architectural styles and with this one, you can become an expert in historic. Ooh, तो इस पे बता यार. कुसनाली के बारे में पता कर रहे हो. Mora, and it's yours. No, whoa. Of course, you are free to pick whatever your heart's desire. The contents and price of each knowledge capsule are indicated in small... Alright, let's try the method that Al-Haytham mentioned.
You really... Oh, okay, okay. Well, take these, please and thank you. My, oh my. You are blessed with a taste for both the exquisite and the extravagant. Customers like you are a rare breed. 1 in 100. No, oh, listen. I have a special offer for you two. If you spend just 100,000 more and more, you can pick any knowledge capsule of your choice up to a value of 1 million. Say what now? Hey, did you hear that? Spend another 100K and we get a capsule worth a whole million. But all the canned knowledge we just bought is easily worth 500,000 mora. If we spend just a little more, we can get something worth 1 million mora. Isn't that a fantastic deal? Think about it. We've gone to all this trouble to get this canned knowledge. And so far, aren't you even the least bit curious about how this whole canned knowledge thing works? We're talking instant knowledge here. Don't you want to try it yourself? Come on. We still have around 100,000 of Alhaitham's moral left. So let's put it to good use by finding something useful for you. You got a deal, Dora. Excellent. Hold on a second. I thought we could choose whatever we want. Oh, but my dear customer, the knowledge capsules over here are worth 1 million mora each. I'm sure discerning customers like yourselves will be able to... Oh, Paimon has a bad feeling about this. Let's use Elemental Sight again to check these. So, what did you see? So, they're all worth about the same amount? Well, anyway, the mora's already been spent, so let's at least try to find something useful. Yes. Let Paimon take a look here. An introduction to traditional Sumeru brew. Not sure we'd ever find volumes 1 through 7, but at least this knowledge should be useful, right? Look, Dory, we'll take this one. All right. Our dealings with Dory went smoothly enough. Let's head to Wakala Funduk and meet up with Alhaitham. Okay. एक ही मिला क्या? Hopefully now he'll finally tell us about what the Academia lost. Boy, you have to understand, and it's the most fantastic quest I know. Like, मेरे को तो अभी तक के पसंद है यार. तो मैं completely agree नहीं करता. मैं बोल भी वही रहा था. You two made it. And from the looks on your faces, you were successful. जिस तरीके से introduction है, like characters का भी है, और एक और चीज है कि उसकी जो स्टोरी है ना, उसका lore के बारे में और पढ़ना background में कुछ लोग so naturally the Academia has people working बहुत here. amazing है वो तो. I came to Port Ormos under the pretense of conducting official business. You're a pretty daring... Relax. No one here is interested in anything we say, and the Matcha won't come here. Okay, we did what you asked. So, can you tell us about the knowledge capsule that the Academia lost? Before that, I have to ask, why are you two so intent on tracking it down? You don't have to answer, of course. You want to meet the Dendo arc, bro? What time हो गया? Ask her about something important. We've been in SUMERU for a while now, but we still haven't found a way. यही तो When we heard that the चीजें Academia had lost something that हर might be related to और the gods, interesting बनाती we है. came here in case it turned out to Like be our कभी-कभी lucky तुम break. वो characters में invest In करते हो, that जैसे मैं case, वो characters you're on में the right invest करता track. हूँ जो मेरे को पसंद है. A short while ago, the Academia lost a knowledge capsule in the desert. वो ज़्यादा fun It's supposedly a divine knowledge वो ज़्यादा capsule. like Use it, interesting and you'll बनाता है. gain the wisdom of the god. Wow. अच्छा ये वो वाला dialogue था trailer वाला. Wisdom of the gods मिल जाएगा तुमको. Do you think we could learn how to meet the Dendro Archon? Ooh, or how to find your sister? I highly doubt it has any mystical properties,
But it does indeed exist. And it's right here, in Port Ormos. So, where exactly? That's what we need to find out next. I won't deny that. As you know, several brigades have been vying for ownership of it as of late, but there is still no victor. My personal finances and connections cannot compete with those of the Eremites. After attempting various methods, I finally managed to reach it. I agreed to However, they adamantly believe that the divine knowledge capsule contains the Scarlet King's power, and that he will return to this world when they obtain it. They refuse to let... So you kept hounding them because they refused to cooperate with you? Yes. Ain al-Ahmar isn't exactly wealthy, but its members are... So, I've been sabotaging their business to force the divine knowledge capsule to ensure the capsule's security and to evade the mantra's notice. The winning brigade will not publicly disclose their victory. Unless I know whose hands the divine knowledge capsule ends up in, my agreements with them will fall through. Dory is the most reliable source of information, but that avenue was previously closed to me. With you on board now, the situation is different. In other words, you wanted us to befriend Dory so you could find out where the divine knowledge capsule is. Yes, you can say that. The day after tomorrow, if I get the opportunity to study the divine knowledge capsule, I will relay my findings to you. Will that suffice as compensation? Okay. You two want to try using a knowledge capsule? Doing so right up... Okay. Time to go. All right. This place works. Show me the capsule you purchased. Here. Sword Fighting Techniques 8. Huh. A combat class knowledge capsule. This class is something of a rare find these days, since most have been taken by the Eremites to augment their battle capabilities. Really? If you want to determine the efficacy of this capsule, I can evaluate your combat ability. However, effects will likely be minimal if you already possess a high amount of strength. We can conduct a controlled experiment where you fight 2 battles. One before using this knowledge capsule, and one after. While you fight, we can use an Akasha terminal to monitor your various physical parameters. There may be variances in your physical strength between the 2 tests, as well as a disparity in your opponent's abilities. But don't worry. I'll run statistical analyses afterward to mitigate any confounding effects. Wow! Haytham! You must have been one of those guys at the academia who got top... Paimon's curious about something, though. You definitely weren't one of those students who needed canned knowledge to graduate from the academia, right? So, why are you risking getting caught by the mantra for this capsule? When you are unable to... Sounds like you're trying to avoid the question. All right, let's begin the test. Just fight as you normally do. इससे By royal decree. Shadow Raven, let night fall. Propagate!
All right. I'll link your Akasha terminal to record data. The next step is to use this knowledge capsule. Hold it in your hand. I'll help you establish a connection with it so you can activate its power. ये 22 हो गया ना, और एक लेवल बढ़ा सकते हैं डेंड्रो की। क्या बोल रहा है ये? कर ले भाई यूज। स्वॉर्ड मिलेगी अपने को डेंड्रो वाली। Hey, how are you feeling? You mean that it worked? All right. Time for round 2. Fight with the same composure as before. The wind knows me. One with nature. Now, I'll start recording data. Oh, hey, Thumb. Well, Wait, how much? Dory's such a jerk! She totally scammed us! 1 million mora? This thing isn't worth a tenth of that amount! of course, this could be because he is so powerful that the capsule's contents were unable to produce a substantial increase. At the very least, this test allowed me to gain more insight into you two. Our deal seems increasingly worth my investment. I'm heading back to Ikela Funduk. I await your response in 2 days' time. This is Mora for when you ask Dory for information. Pay her as much... ट्रैवलर गरीब रहता ना, ट्रैवलर के दुनिया दूसरी दुनिया का है ना, गरीब ही रहेगा बेचारा, हमेशा ऐसे ही दिखाएगा। मैं कहाँ से दूंगा इसका मोरा? टू डेज फ्रॉम नाउ, मतलब एक्चुअल के तो 2 डेज नहीं है। आई होप tomorrow is that 2 days? Let's see Dory today and ask her about where the divine knowledge capsule is. Partyyy.
Welcome back, my loyal patrons. What can I do for you this time? You name it. Canned knowledge, supplies, or anything else. Can you really? Uh-huh. So it appears that canned knowledge alone is no longer sufficient for your opulent appetite. Then please, oblige me. Tell me what you have in mind. Oh! I knew customers with pockets as deep as yours would undoubtedly crave something more profound than ordinary can. But you know, that kind of information isn't. After all, I had to work really hard to weasel my way into the auction site. Not to mention that if anyone found out that I was the leaker, I would be in. But how can we be sure your information is accurate? Paimon's curious. How you just happen to have this kind of info, Because to me, anything of value is what I consider to be my supply. Therefore, I must always be aware of what's hot on the market in order to test for the information's authenticity. Well, you've no need to worry about that. I used a camera to take a picture of the transaction. That way, no one can dispute it. It's always a pleasure doing business with such sterling patrons. Now that you've paid in full, here's the scoop. The Divine Knowledge Capsule was purchased yesterday by a certain Misery, the leader of Ain el-Ahmar. Ain el-Ahmar? You mean the Eremites who worship the Scarlet King? Ah, so you're all... The group has done everything in their power to obtain the Divine Knowledge Capsule. And that Divine Knowledge Capsule is unlike any other canned knowledge I've seen before. It was glowing bright red. The capsule is clearly visible in the picture I took. You can look for yourself. Thanks for the info, Please, it's my pleasure. It's all thanks to discerning... एकदम मतलब टिकट. Hi Aman, welcome to the stream, bro. How are you? It ended up in the hands of कैसा रहा दिन? Let's head back and talk to Al-Haytham. True history is sometimes even more exciting than legend. क्या बोलते? Al-Haytham, we got the info you wanted. Really? All right. Let's hear it. Dory even gave us evidence to... Look at that. Clear as day. It must have taken some... All right. In which case, if we play our cards right... बढ़िया बढ़िया एक नंबर ब्रो. Paimon didn't get why you were provoking. तू आया नहीं, मैं COD में आया था यार थोड़ा बहुत. We can finally have... Thank you for your time and efforts. Take a few days off while I make some preparations. Let's meet up again on the app. See you then. Al-Haytham sure is taking his time. Where could he be? Oh, there he is. Sorry to keep you waiting. Let's head to the pier in front of Pharos Lighthouse. Yep, let's go. यहाँ से जा पाएंगे इजीली. यार वो उसका तभी टेलीपोर्ट दूर है. मैं आऊंगा ऑनलाइन. अच्छा हाँ हाँ तेरा एग्जाम से ना. बराबर है बराबर है. डालना भूल गया. ओके ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं. अजितेश सिंह आईपैड मिनी 16:0 रेशियो है क्या? नाइस यार. 16:0 रेशियो में तो समझा नहीं.
बट यू नो ब्रो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसका जो फॉर्म फैक्टर है ना, द साइज इज लाइक परफेक्ट, ऐसे 2 पाम का, तो फॉर्म फैक्टर बहुत सही है, पोर्टेबल है और फोटोज वोटोज निकालने के लिए सही है। 16:9 ना, हाँ हाँ। Wherever in this world I roam, है मेरे लिए वैसा। I carry memories of my home. This blade. It is the last link I have to the land of my birth. है ना, मतलब अगर मैं स्ट्रीम नहीं भी स्ट्रीम पे भी कर रहा हूँ तो वो भी बहुत कंफर्टेबल है, but I didn't know you were और अगर crazy मैं enough ऑफ to स्ट्रीम भी actually कर रहा show हूँ ना, up. बहुत कंफर्ट। It was I who demanded that these negotiations take place. I was more worried that you might go back on your promise. This quest is too boring But and to your too credit, long, कुछ it होता भी appears that नहीं you're है sticking इस to your quest word. में, और This is 3-4 turning into घंटे का quite an टाइम पास occasion. है। हाँ I मतलब यार also brought some लास्ट टाइम मेरे backup. ख्याल से I मैंने assume you 1 don't घंटा mind. 1.5 घंटा तो चलाया ही था यार इसको। Aren't you the वही है। brat from the restaurant the other day? Aspect ratio ना, yeah, You've come bro, to got you, support this got you। हाँ, lunatic उतना because ही he है helped you उसका। out? Fine. Your ये funeral. 8 इंच है, मतलब ऐसे साइज I'm not में। going to mince my words. Once we're और done with वो you, you'll गोरेला be nothing ग्लास more है, than और fish food. बेसिकली Get 'em, कैसा है boys! कि तुम्हारा जो अभी कैसा है, जैसा आईपैड है, आईपैड जो लाइक नॉर्मल बड़े 10 इंच वाले आईपैड है, उसमें M1 M2 चिप चल रही ना, तो इसका कैसा है ना, इसमें A15 बायोनिक है, तो जो एप्पल 13 में आई थी ना अभी अक्टूबर में, उसी के साथ ही ये भी आई थी। तो यू नो लाइक मेरे पास आईफोन है, तो मैं सोचा कि यार मैं फिर तो दूसरा फोन को ही क्यों अपग्रेड करूं, मेरा फोन तो चल ही जाता है। एंड देन एक ये ऐसी चीज है जिसका पता है क्या, लाइक एक कुछ अलग फॉर्म फैक्टर वाली एक चीज हो जाती है, एक अलग एक्सपीरियंस का कुछ, और गेमिंग के लिए तो बहुत ही परफेक्ट है, कंट्रोल ही है मेरा ये, मतलब वो भी आएगा मतलब ऐप स्टोर पे, तो जो मोबाइल गेमिंग में तो वो तो कुछ है ही नहीं, बेस्ट ही चलेगा, बहुत ही स्मूथ चलेगा। और ऐसा नहीं है कि मतलब ये साल क्या अगले साल के स्टार्टिंग तक के भी अभी मैंने इसको जेंशिन को मैंने सेटिंग खोल के ही नहीं देखा था। या आई मीन एप्पल हैज इट्स ओन एडवांटेजेस, इट हैज लॉट ऑफ एडवांटेजेस एंड इट इज ओवरप्राइस्ड टू बी ऑनेस्ट समवेयर। Did you use it? Great! Now we can... बट कुछ चीजें फिर वो तुम्हारे एप्पल के साथ ही आती है, वही है। अच्छा आज मोना का बर्थडे है क्या? ओ ओके, हाँ मोना का ना, हाँ हाँ मैं उसका पिक्चर देखा ना, अभी पकड़ के कुछ तो रही यही है मेन ट्रेलर में का सीन। ये क्या है कि वो कंट्रोल हो रहा है, उसका वो रेड हो गया उसका, तो यही है ना, वो उसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, जैसे जो स्टेजेस है जिन्होंने मालिक को मान के रखे, वो भाई ये है मतलब लंबा होगा मैं मानता, और ये कुछ चीजें इतनी मजेदार है देखने के लिए, एनी में देखे जैसे ही तो है, एक मूवी देखे जैसे ही तो है। वाइट हो गया हो, यानी कॉन्शियसनेस ही नहीं है अब उसको, वो कुछ तो मेसअप हो गया। वो मशीन जो रहती ना 4 वाली रूइन के जो क्या बोलेंगे यार उसको, गलत वर्ड मुंह में आ रहा है। Of course. I was only trying to मोना का बर्थडे, हाँ मोना भी भाई कैसे खुल गई थी पता नहीं मेरे को, उसके 8 मतलब एक उसके मैं सिंगल तब मारा था, तो 8 में वो खुल गया उसमें, 8 विशेष के बाद डीलर, तो एक 10 पुल में ही था वो काइंड ऑफ। ने नारुतो की फीलिंग ले लो गाइस, सही बात है, होता तो है वो, और इमोशनल भी कभी कुछ अच्छा लगता है, जैसे इस्तो की स्टोरी और काजुआ के लिए, तो ऐसे इमोशनल नहीं बट बहुत सही लगी थी, इमोशनल लगता ही है काजुआ के लिए थोड़ा, जैसे उसकी स्टोरी और गोल्डन एप्पल आर के पहले गो में भी जैसी बताए थे, नो डाउट। आपका कैसा रहा दिन? अरे बढ़िया था यार, चिल था, मेरा थोड़ा इंजर्ड चल रहा था, तो इसलिए यार थोड़ा सा ये हो रहा है, अभी पर काफी बेटर हो गया, मैं 2-3 दिन का ही था, मेरे को पता था 2-3 दिन का ही रहने वाला है, ज्यादा नहीं 3-4 दिन का। I've heard of numerous incidents of researchers in Satyavada life going insane. The state that man is now in suggests that this is a similar situation. Very cool. This divine knowledge capsule does appear to be linked to the gods, but beyond that,
It doesn't seem मतलब anything like the rumors आयातों का suggest. कैसा लगता है ना, ऐसा थोड़ा सा Possessing it ओल्डी doesn't लगता है, grant you divine थोड़ा wisdom or power. काइंड ऑफ Did ब्रिटिश you या क्या hear what he बोलेंगे, said? स्पेनिश। World, पर forget अल me. हैतम का थोड़ा What अलग ही could that कुछ है। possibly mean? कॉर्डम खेलने का सोच रहा हूँ मैं, खेलूंगा मैं स्ट्रीम पे खेलूंगा, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी क्या मैं थोड़ा हाथ बैठ जाए ना, इससे मैं ऑफ स्ट्रीम वगैरह थोड़ा देर खेला था कॉर्डम। What a shame. We were so close. Still, Paimon didn't expect the divine knowledge capsule would अभी be क्या so है कि यहाँ पे अभी कैसा है ना, Imagine if कॉर्डम we इसलिए नहीं tried to क्योंकि open मेरे it. को ये एक who knows what मतलब would have चैनल happened to ऐसा us? जेंशिन की तरफ ही As रखने things का तो stand, है there वैसे is no थोड़ा, पर reason for me खेलेंगे to ऐसा remain वो in नहीं Port बोल रहा, Ormos. बट वही I मेजॉरिटी। believe और our दूसरा collaboration has also reached its end. कि इसमें बिल्डिंग है ब्रो, इसमें बिल्डिंग है, इसमें क्वेस्ट करने हैं, एक्सप्लोर करना है, Since you're a तो member वो of the इंटरेस्ट academia, ज्यादा पकड़ रहा है do you कॉर्डम have से ना, any इसीलिए idea तो how we could go about इतना कि meeting मैं उसके Lesser बारे में Lord स्ट्रीम Kusanali? कर रहा हूँ। Truthfully, I don't. तो Lesser वो Lord चीज है। Kusanali appears to exist outside of SUMERU's entire administration. Most of the time, you wouldn't know she exists at all. Moreover, since the academia possesses the Akasha, a symbol of our deity's wisdom, scholars have no reason to desire to make contact with the deity herself anyway. Everything about Lesser Lord Kusanali is such a mystery. I'm heading back to the academia. How about you two? It's almost the day of the SUMERU's festival. Maybe we should head back too. We've been rushed off our feet over the past few days, so टीम maybe पे a little rest and खेलने relaxation को will do कब us बोला good. मैंने? हाँ मतलब वैसा नहीं बोल रहा मैं, इन जनरल बता रहा हूँ तेरे को, इन जनरल बता रहा हूँ तेरे को, क्योंकि वो थोड़ा होता है, बट मैं सीओडी भी खेलूंगा ही, मैं वो बोल रहा हूँ तेरे को, सीओडी भी मैं खेलूंगा ही। Then we'll part ways here, Al-Haytham, until we meet again. तो अल-हैतम और डोरी का चैप्टर यहाँ पे सब क्वेस्ट खत्म हुआ। Now, do I deal with this thing first? Or should I produce the report that the higher-ups require? हायर अप्स कौन है? अब होगा दिमाग का दही इस क्वेस्ट में। अच्छा ऐसा है क्या? चैप्टर 3 एक्ट 1 कंप्लीट हो गया क्या? न्यू क्वेस्ट कमिंग टू द सबजेरू फेस्टिवल। अच्छा ऐसा है क्या? बाप रे बाप रे बाप रे। परफॉर्म इट्स चार्ज इलेक्ट्रिकल कोलिजन। अच्छा हाँ ठीक है, करने दिया। वैसे तो समझा नहीं था, अपने आप ही हो गया था। एक सेकेंड, इसमें दही दिमाग का दही होगा क्या? 500 अचीवमेंट पूरी, 500 अचीवमेंट पूरी। वर्ड यार कॉर्डम में भी मजा आ रहा था ब्रो। एक देख रहा था मैं, एक ब्रो इतना यंग लड़का है, इतना यंग लड़का है, दीपांशु कॉड वाईटी ऐसा कुछ नाम है उसके चैनल का। क्या खेल रहा था भाई वो बैटल रॉयल, बहुत ही जो है अकेला सोलोवी स्क्वाड। नाम पूरा इंडियन दिख रहा, पूरा इंडियन, और भाषा यार हिंदी नहीं, कोई अलग ही भाषा वाला। ये क्या है? ये हो गया। एक ये वर्ल्ड क्वेस्ट भी थी। इसके बाद कितनी बची है यार? बहुत बची है क्या इसके बाद? मतलब एटलीस्ट यार 700 से तो बढ़ तो रहा है अपना, बैठे बैठे थोड़ा एडवेंचर रैंक। इसमें कुछ मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग व्हाई नॉट जस्ट गेट इट आउट ऑफ द वे, यू नो। क्वेस्ट तो है ही वो, मेरे को ये क्वेस्ट के बार भरे रखना अच्छे नहीं लगता। 1600 किधर है? सबजेरू यहाँ से दिमाग का दही है क्या?
More than 1 hour at least. Missed the Sub-Zero's festival, right? Thank you so much for the like, guys. Paimon thinks she must be around the Grand Bazaar, since she showed us around there last time. Salut. Time to go. Grand Bazaar. There she is! Dunyarzad! We're back! Just as promised, Traveler and Paimon. I'm so glad that you two came back to celebrate Lesser Lord Kusanali's birthday. Indeed. The festival's tomorrow. We've been preparing for so long that I can't... There's no need to be nervous. Paimon's sure Akam that Hiran, Lesser Lord welcome to the Kusanali stream. will Hello, feel hello, hello, everyone's sir. gratitude. आपको भी सलाम. कैसे Thanks, हो? Paimon. I hope that everyone who comes to the festival will also have a good time. Sheesh, I'm collecting primos for Speaking of Jungwe. I'm which, so close did now. you manage to make your way to Port Oh my Ormos? god, bro. I hope Discover you get anything him. over there? I hope Jungli comes home soon to you. I wish 70 but didn't get him, bro. I spent 10.5k primo gems on him and he still didn't come. And finally a 5-star when it came kaching. We didn't find any information. Instead, we are only left with more questions. See. Sounds like you two had another exciting adventure. If there is another chance, Then you I will would get love in to more, join. maximum more 5 Lady, wishes, bro. if you went to Port Victor, Ormos in your current state, maximum we'd more both be 5 in for a wishes. lifetime of trouble. Oh, she comes again. There. You were eavesdropping! Jiya. अच्छा ये तो इसके साथ It's ही है ना. called covert protection. Keeping an ear out for what's going on. It's alright, Dia. I merely said इतने I दूर would. से. The festival's tomorrow. I've been doing nothing but causing... Even when you put it that way, it's still... बस Don't मैटर worry, my समझ जाए थोड़ा guardian. क्या चल रहा है. ऐसा Okay, एकदम पूरा fine, but देखने की only जरूरत नहीं tonight. है. Tomorrow's a Was big day, really and many confusing. no-good How so, scumbags bro? are gonna try to Akam? take advantage of that. Like in what sense? Oh, you two must be exhausted from your long journey. I've already prepared a room for you to... Whoa, you're so... The Mon, 1,000 rose spring. Get your spices here. We've got all kinds. Let's go. Where is that? Higher. अच्छा ये बाजार में से बाहर निकलना पड़ेगा ना. और वो कहाँ मिलती है वो स्वॉर्ड कहाँ मिलती है सुमेरु वाली. उसका ब्लूप्रिंट वो बनाना है. सुमेरु के सभी बनाएंगे ना. अभी F2 पीस इसके सब बना लिए अभी तक के जो मिले, तो इसके ही बना लेंगे. वो स्टोरी में मिलती है क्या आगे? और ये नहीं खुला ना. ये तो टावन है. Time to go. Time to go. ये नहीं खुला ना अभी तक. ये इतनी जल्दी नहीं खुलेगा शायद. ये इतनी जल्दी नहीं खुलेगा. I got Jonglin 20 PT. So lucky, bro. OMG. Awesome. Congrats, bro. Congrats. Full of riddles, but barely completed it. Right. Completed. Right. This new shipment. Why, Oyo? Give me two. Yeah, bro. Why, Oyo? Why? Time to go. Choo, where are you? किधर बाबा? किधर जाना मांगता? Should I try going from here?
Yo, Shahinsha is back. Thank you so much for coming over, bro. Thank you guys so much for the likes. Means a lot. And now Ganyu waiting for her. Oh my god, that would be an insane team. I mean, Ganyu protected by Zhongli's shield is like, you know, unstoppable Wherever in this cryo world I turret roam, doing I at carry least memories of my home. 20-25k damage non-stop. This blade. More than that. It is the last link I have to the land of my birth. Time to go. This thing I mean. Oh yeah, there it is. Sumeru city. no problem bro. अरे collect your primos पहले एकदम तुरंत में. Any update on the giveaway competition? नहीं bro, same status जो मैंने कल बताया था. तो आज का मैच देखा, कौन सा मैच था? आज इंडिया का मैच था. हांगकांग किसके साथ था? 6 टीम है ना टोटल एशिया कप में. इंडिया की मैच बोल रहा है. हाँ, जो कल था वही सीन कि अपन 15-20 दिन में सितंबर में आने वाले करेंगे. अपन सब भाई मिल रहे, जो बात कर रहे, रोज आ रहे. इंडिया वर्सेस हांगकांग था ना, ठीक है, नहीं देखा है अभी तक. तो फिर उसके बाद एक 15-20 दिन में अपन करना शुरू करेंगे. उसमें अपन एक वेलकिन पास देंगे, फिर वीकली वैसा देखेंगे जैसे जैसे जाते जाएंगे. समझ रहा है? वीकली वेलकिन पास देने का अपन करेंगे. और जो अपन ने बोला था, जैसे कुछ लकी ड्रॉ रहेगा, कुछ चैलेंजेस रहेंगे फन कैजुअल टाइप के, वैसा सीन रहेगा. और क्या, चिल है वो. कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दा ही नहीं है. अपन आ रहे, जुड़ रहे, बात कर रहे, चिल कर रहे साथ में, वो है. उसमें फिर वो अपन करेंगे ना, और उसको सेकेंडरी बनाएगा ना, तो वो चीजों को थोड़ा और बस फन करेगी, एज करेगी. और That's Paimon's specialty. Paimon can tell you stories next time. Oh, if you don't mind, how about we all walk around together tomorrow? All of my friends will be working the festival. Yeah. It'll be pretty hard to relax and enjoy the festival if Dia's constantly hovering over you, right? Then let's meet at the nearby bazaar first thing tomorrow morning. Have a great night. It's a deal. Good night, Dunyarzad. I may be too excited to fall asleep tonight. See you tomorrow. Paimon's starting to really look forward to the Sub-Zero festival too. Will there be lots of yummy food? Oh, no. Yeah, yummy Thinking about food is just gonna... Did we oversleep? We should go meet Dunyarzad right away. The coming of the Sub-Zero festival. Go to the appointed place and talk to Dunyarzad. तो मतलब ये लाइक बहुत ज्यादा, और स्टोरी जो है ना, वो बहुत लाइक कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाता है. लाइक यू नो, then you might love some character and build him just because of that. I've been waiting for you to. By this Good morning, Dunyarzad. We must have overslept a little bit. I know, Not at bro. all. अभी ठीक है. You know well. अभी थोड़ा निपटा लेते जितना फटफट आसपास है तो, और क्योंकि थोड़ा Many करके तो vendors खत्म came out करना of ही the पड़ेगा blue ना to ब्रो. support the event, and they insisted on covering costs themselves. Let's go give them some business. They paid for everything out बहुत of देर pocket? चलाती है ये. Oh, sounds like they're not in this just for the Mora. They all said that contributing to a lively festival atmosphere is more important than money. Especially since we don't often get to celebrate Lesser Lord Kusanali's birthday. Ooh, Okay. they're selling food over that way. Let's go take a look. Yeah. Let's go, Paimon. No worries, Akam, bro. You are not being a spoiler at all. You are just This saying is that, you know, a it stall was offering foods from the it's Half-Mega lengthy. I feast. do understand that, bro. That you has could tell been one straight of the away. common I thought reviews. most So people nowadays don't, wouldn't know. you know, no need for sorry or Mushrooms, something. flowers, and all kind of fruit.
We're about to delete this game. Paimon's a little It's another Sub-Zero. Generally speaking, the most common selections are foods like Rukkhashava mushrooms, lunar lotuses, SUMERU roses, Shawarma. Sunsettias, Kapulatas, Bhook lagi, Hara fruits, shawarma and khilao. Zaytun peaches. So, the Sub-Zero Festival is a vegetarian holiday? You don't have to be a vegetarian to enjoy the spread. I We am just a use the 7 vegetarian. foods to symbolize the 7 virtues of the Dendro Archon. Wait, but if that's the case, if SUMERU uses vegetarian food to represent the Dendro Archon, then wouldn't the Pyro Archon's festival be full of food like roasted fowl, juicy meatballs, grilled steak? Oh, Traveler, we have to go to Natlon as soon as possible! I hope your wish comes true one day, Paimon. Thanks! Alright, how about we also check out some of these other stalls? Let's go. Dear customers, would you like to try your hand at alchemical divination? What's alchemical divination? Those two things sound like they'd be fun to try together. Right? I thought the same when I first heard about it. It is said to be a mysterious craft invented by none other than Lesser Lord Kusanali herself. So, how does it work? It's quite simple. After you give me any 2 alchemical reagents, I'll use them to perform a random transmutation. Sure sounds random. So random that it will probably fail. That is So precisely random what that we it will need. probably After the fail. transmutation How to fails, participate your in the one and giveaway? only diviner Very here will simple interpret the actually. remnants. The thing is, in September, I will be starting the giveaway. So in that, it can be like lucky draws, or it can be like some challenges, some casual gameplay. Maybe it will be like a cartwheel, and it will have monster's name written on it, and the person who gets selected, or like we can sometimes take 10 people, or sometimes take randomly the person who are there from Nightbot and all from the chat, and that person will play with that has to defeat that monster. So some sort of games basically, as some chill that we can do for half an hour, 1 hour together. Apart from that, there is what in the game to do anyway. So for giveaway specifically, we'll do this some games or something like that, and lucky draw as well. And the winner will get a moon, this blessing of the Welkin moon pass. Simple. It will be very simple, not too complicated, but just in a simple, chill way of doing it basically. That is just like for me like a secondary thing basically because I like to connect to people and enjoy this amazing game together, so we are doing that, right? हाँ, yes. बस उतना ही है और कोई नहीं. तो वही वी आर डूइंग दैट टुगेदर, उसमें कनेक्ट हो रहे. अब वो ये सब सेकेंडरी चीजें तो उसका थोड़ा और फन बढ़ाती है, और क्या, उससे ज्यादा ही क्या होगा. Well, according to Lesser Lord Kusanali, everything is interconnected, and all that occurs can be traced back to fate. Why does everything sound so much... So that's the true wisdom behind it. This young lady sure knows her stuff. So, how about it? Want to give it a try? क्या देना है इसको? क्या देना क्या है? कुछ भी.
कुछ भी दे दो। Okay, one moment. It's the moon. Paimon wants to take a look too. Is it? It looks more like a pie that Paimon bit into. Generally speaking, the moon signifies... It means... Wait a moment. Is he really looking it up in a book? Oh, I remember now. It means illusions and lies. Illusions and lies? That sounds rather ominous. Yes, but this book says that if you trust your intuition and overcome your fears, the sun will surely rise. उनको एक एडेड एडवांटेज रहेगा, नए लोगों को भी चांस रहेगा, वो थोड़ा सा उनको थोड़ा सा एक एज रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि लकी ड्रॉज में वगैरह उनको ही ज्यादा एज होता है, उनको ही ज्यादा एज होता है वैसे जो थोड़े से रेगुलर है, तो वो है एक थोड़ा 10-15 दिन में मैं चीजें मेरी और ऑप्टिमाइज कर लेता, मेरी स्ट्रीम मेरा हर चीज और थोड़ा सा, अभी मैंने जेंशिन स्ट्रीम करना शुरू किया है। Still pretty interesting. Okay, on to the next stall. They say the Sub-Zerus festival was very lively a long, long time ago. Large flower carriages used to parade through the city. As they headed towards Port Ormos, people would throw flowers, candy, and liquor all along the way. Dunyarzad's eyes are sparkling right now. I wish I could have seen that spectacle. But if you ask me, I'm sure Nilu's dance of Sub-Zerus would be just as impressive. अच्छा फॉलो करना, नहीं भाई क्राफ्टिंग बेंच पे क्या करना, काजुआ का एक हुडी मिला यार ऐसा, बस वही चीज है, मतलब लाइक मेन है आओ साथ में चिल करो, जो गेम में खेलना है, जो तुम अपने घर में खेलने वाले हो। अबे बच्चों चुप रहिएगा थोड़ा। Soldiers, fall into formation if you want any Yalda candies. साथ में खेल के चिल कर रहे, शेयर कर रहे अपना अपना अकाउंट और ये सब, बाकी सब चीजें तो क्या है, ये सब चीजें गिव अवे, चैनल ग्रोथ, ये सब चीजें है, बट वो ही एकदम वो एसेंस नहीं है। Miss Dun, in the few short days it took to prepare for the Sub-Zerus festival, the children have all grown very fond of you. The hallowed Night of Flowers. It's an honor that you know my name. Attention! In the name of Ferris, the Night of Flowers, I commend you on your contributions to the glorious Sub-Zerus festival. All right, little soldiers. Take your Yalda candies and don't forget your loyalty to Lesser Lord Kusanali. Dismissed. Yes, Knight Ferris! Knight Ferris. What is going on here? Ferris, the Night of Flowers, is another Sub-Zerus festival icon, and one immensely popular with children. In the past, the actor portraying Ferris would also sit on a flower carriage. It's all thanks to Miss Dunyarzad. As are we to you, Vihar. Oh, not at all. Oh, speaking of tradition, do you want some Yalda candies? They're a festival staple, and I happen to have some boxes readied here. Take a look and pick whichever one you want. Whichever one? Don't these boxes all look the same? That is the fun part. Each box contains a random flavor. It's up to the luck of the draw. Flavors include lavender melon, hara fruit, sunsetia. Ooh, those all sound pretty good. And there's also lizard tail and oni kabuto. Huh? What's up with those two flavors? Oni kabuto is a little spicier than lizard tail. रिलीज करेंगे ना स्टोरी भी और आगे की, फिर डेजर्ट वगैरह उसके सबके साथ अलग एक चलेगा, तो ये सब में 2-3 महीने जाएंगे, 3 महीने जाएंगे,
3 महीने और पकड़ लो एक्सप्लोरेशन को, 3 महीने और पकड़ लो, पूरे सब सर्वर्स के काफी लोगों को मेजॉरिटी स्टैंडर्ड पे आने को गेम स्टोरी और एक्सप्लोरेशन सेंस में। फिर उसके बाद 14 वगैरह निकालेंगे, वो फोन्टेन क्या है वो, और आगे के लैंड वैंड खुलेंगे ही ना, या फिर हो सकता है उनको जल्दी भी It's all right. Paimon believes in you. I also believe in your intuition. Great. These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? अब वो क्या बोला था उसका, वो पढ़ा नहीं अच्छी से। That's unfortunately lavender melon. Oh. Paimon thought you survived so many epic battles. The Sunsetia flavored candy was in box number 4. How about this? The most important thing is that everyone has a good time at the festival. So please, take both boxes. Really? Thanks a lot, Knight of Candies. It's Night of Flowers, not Night of Candies. Paimon really wilted the carriageless Knight of Flowers. They all basically sound the same. We got our candy, so let's keep going. Oh, actually, I just remembered that I left something behind. Since you're here, can you come with me to get it? You probably forgot because you're so excited about the Sub-Zero's festival. How embarrassing. पर 60 FPS जब से क्या ना बहुत स्मूथ हो गया, बहुत ही स्मूथ हो गया मेरा। इसका फ्री और टेक्सचर भी काफी इम्प्रूव हुए, नो डाउट। ग्राफिक्स पूरे हाई कर दिया मैंने देखा ही नहीं था, 2-3 महीने से गेम खेल रहा हूँ, अभी सेटिंग्स कर खोल के देखा ही नहीं था। और हायर Time to go. मारना इनको। We're too late. Who knew the little lady was such an early riser? I know, right? Hey, wait a minute. Boss, isn't that her? Oh, that most certainly is. We're in luck. She's walking right into our clutches. Those Eremites. Who are you? I don't believe that. That's right. We haven't received any of their mora, but... They're a gang of kidnappers! Traveler, hurry and protect Dunyarzad! Hey, did you scumbags even consider that the Homiyanis might have hired a merc that outclasses you? You're... Dia! Dia the Flame Mane! No wonder we mercs haven't heard anything about you for so long. You sold your unruly mane to the highest... Don't speak so disrespectfully. My family started working with her as gratitude for her past kindness. Don't worry about it, my lady. Just some friendly banter between mercs. One punch and those rabid dogs will expose themselves for what they Aren't your claws all dull by now? Don't get too cocky! Traveler, take Miss Dunyarzad to a safe location. No, we're gonna stay and help. There's too many of them. Please be careful. Don't waste your time. क्या 3, 2, 1 start. Escape within the time limit. Okay. Dunyarzad, are you okay?
I'm fine. You sure you're okay? I'll be fine after some rest. I'm more worried about Dia. After all, none of this would have happened if I hadn't insisted on coming out. Yeah, don't worry. My lady, Traveler, found ya. Dia! You took care of— Any more of them? Or rather, did anyone follow you? Dia, your arm. Oh, this? I'm fine. It's just a scratch. Normal. Please, let me take a closer look. Come on, it's nothing. Hold on, you said something about a new greatsword. What happened to the one you about that. Well, I sold it, because I was low on Mora. Stuff like this happens. It can't be. The anonymous donation that was used for the venue's final round of preparations? Hey, Miss Dunyarzad, I wasn't trying to make you cry, and I'm not gonna lose my commission because I made my Okay, making your employer cry won't affect your commission, but... Yours... Thank you very much, Dia. Don't be like that. I get embarrassed really easily. Are you feeling unwell again, Dunyarzad? My lady, your condition. Traveler, can you take her somewhere to rest? I'll look around the area to make sure we're safe from an ambush. No problemo. I'm sorry. यही गोल Are you feeling better, Dunyarzad? Yes, much better. Just give me a few moments and I'll be good to go. I didn't realize you were concerned about it. I guess I shouldn't continue to keep it a secret. I was actually born with Elazar. Oh, ये तो होली को भी वही है. Can't believe it's out. You've already heard of Elazar. In that case, you probably know about its severity. SUMERU's current medical advancements still have... Dunyarzad. There's no need to be sad. I've always lived with Elazar and I came to terms with it a long time ago. Compared to the simple fact that I'm afflicted, I know that my family loves me dearly. They've done all they can to provide the best environment for me, so that I can live for that much longer. However, I know. Did you know? Since I was a child, all I could do was sit on my bed and stare at everything outside of my window. I'm sure my family's worried and disappointed in me for running away, but I just didn't want to have any regrets. I wanted to meet other people. To me, there's not to mention this way. When my final day does arrive, at the very least, many people will remember that I once existed in this world. Right? As long as you don't forget Paimon. Paimon also... Thank you two so much. I apologize for the depressing conversation. To be honest, Lesser Lord Kusanali gave me the courage to do all of this. If it weren't for her encouragement, I wouldn't have taken that first step. Thanks. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is... Oh, right! Isn't it almost time? Huh? Isn't the dance of SUMERU? Nilu will recreate, and with that, my wish... Then what are we waiting for? Let's go! Yeah, we should... ये पास पे पड़ेगा. Follow the wind.
और दूर हो गया ना। Time to go. वैसे कौन सी जगह पे हो रही है इसका डांस? हेलो आयुष, गुड नाइट ब्रो, सोने जा रहा हूँ तू। Time to go. Finally. Were you not aware that the law prohibits this type of performance from taking place without prior permission? Over there! Someone's yelling at Nilu! I think I just saw the Academia's Grand Sage. Why is he here in person? But the Dance of Sub-Zerus is one of the key parts of the Sub-Zerus Festival. If we can't perform it... The Sub-Zerus Festival. The law also prohibits the private hosting of large-scale religious festivals. Only the Academia can host such an event. If you continue to resist, we will have to order an investigation into every single event organizer. The Grand Sage has already granted you much leniency. I advise that you exercise tact. How did things turn out like this? The Academia was originally responsible for the Sub-Zerus Festival, but they failed this responsibility for many years. I need to speak with them. They have final say in all of this. This is a hard pill to swallow, but... Art, dance. Aren't you ashamed of pursuing such frivolous and meaningless activities in this land of knowledge and reason? Our Archon created the utopia that is Sumeru City for all scholars who sought validity, verity, and truth, while people like you wish to defile it. No. I believe that our Archon never rejected the arts. Even the goddess of flowers dedicated a dance to her. With your lack of intellectual credentials, I do not believe you are qualified to debate with me. What you should be doing is finding workers to tear down this ridiculous eyesore. Morning walk पे अरे वाह यार बढ़िया है. Enjoy. When we return, have the scribe draft an ordinance before the next Nyagarbha day that prohibits public art performances. We will announce it to the public later via the Akasha. Understood. I will inform him when I return. क्या बोलते? The Sub-Zerus Festival. Go celebrate the birth of that god to your heart's content. Nilu, are you okay? Oh, Dunyarzad. Yeah. Let's go somewhere the Academia can't find us and perform there. Or we could get people to block them off so they can't interrupt the performance. No. They just threatened to investigate the organizers. If we were caught... Nilu, it's all right. Don't worry about it.
थोड़ी But देर you've been में. looking forward to the Dance of Sub-Zero so Thank you much. so much And for I the know like, how guys. important this festival is to you. It's okay. Seeing you, it would be too risky to continue the Sub-Zero's. If you say so. But you can sneak out for the next Sub-Zero's festival, right? The next one. Yes. ये भी dialogue. Okay, it's a promise. How many It will be a they'll have? smashing अरे success. cruiser said मेरे भाई किधर cruise कर रहा है तू मेरे chat के अलावा? I can't believe this is how Thank you things so much for turned out. joining in, bro. Those How are heartless you? How have you geezers. been? What is up? Arkan quest खत्म हो गई तुम्हारी? It really is okay. Still. नीलू स्टार कितना सस्पेंस क्रिएट कर रहे कुशन आली के आजू बाजू कि कुशन आली को कुछ 100 सालों से नहीं देखा है लोगों ने. The festival ended the way it did. Nero and Dunyarzad promised to make the next Sub-Zero's festival a success, but Dunyarzad is running out of time. Yeah. All connections have been secured to construct the most stable. The project is entered its most critical phase. Unknown X कौन है ये Unknown X? Thank you so much for the like, boys. भाई ये quest इतना बड़ा है. हाँ ना यार, सब यही बोल रहे हैं. Thank you so much for coming over, XO. Always love you, bro, for coming in the chat and expressing yourself. But बहुत बड़ा है, सभी वही बोल रहे हैं, बहुत बड़ा है. But I guess वो अब अपने को कैसा रहता ना, अपने को एक साथ ही पूरा निपटाना रहता ना. Thank you so much यार लाइक के लिए. तो इसीलिए धीरे धीरे भी कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा टाइम लेके, थोड़ा थोड़ा ये करके, थोड़ा ये करके. बट ठीक है, एक बार का वो खत्म हो जाए तो फिर बाकी की चीजें ही बचती है. फिर आर्कन क्वेस्ट हो गया तो 60% ऑफ वही है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ. इसमें तो वो एक बार वो निकल ही जाए, फिर आराम से सिर्फ एक्सप्लोर वगैरह करते रहेंगे. और कुछ चीजें जैसे ट्यूटोरियल जैसे ये क्वेस्ट में वगैरह फिट करते वो, ताकि तुमको जैसे अभी ये जो जैसे इवेंट भी है पकड़ ले, उसमें वो पूरा पार्कोर पे हाथ बैठ गया अभी. और जोंगली C1 हो गया. ओ भाई कांग्रेट्स भाई, क्या बात है. नाइस. 60% हो भी गया. देख इसका क्रूजर, इसका सेड का हो भी गया 60% एक्सप्लोर उसका. तो वही है. उसके बाद फिर यही है ना कि फिर भी तुम्हारे पास रहेगा तो दो महीने का, 2-3 महीने का surely enough to convince anyone to become a wanderer. और फिर कैरेक्टर बिल्डिंग, और फिर अपना आर्टिफैक्ट फार्मिंग, और फिर अपना ये तो है ही बिल्ड करने का, सॉरी स्पाइरल अबिस चैलेंज करने का. तो चीजें है ही, नो डाउट. थोड़ा मैं क्या ये टीम के साथ मैं थोड़ा ब्लूम, एक्चुअली मैं खचिंग को रखा था ऑफिशियल के साथ, वो दूसरी कोई टीम में चलता है. बट ऐसी नॉर्मल एक्सप्लोरेशन के लिए एक हीलर चाहिए, रहना चाहिए, इसलिए बारबरा को रखा है. नहीं तो खचिंग के साथ ये प्रॉपर एक विकन टीम बन सकती है बढ़िया सी. मतलब करके देखा मैंने, अच्छी, मतलब और बिल्ड करना है, वही तो करना है. और मैं थोड़ा यंग, थोड़ा कम लेवल पे हूँ ना ये इसके सेंस में, एक्सप्लोरेशन में तो सभी इक्वली कर सकते हैं. Did you not get enough sleep? I'm doing well. There's no need to worry. बस Shall we go? छुट्टी थी 2-4 Let's start with दिन the stalls over तो there. मैप खोलना Sure. स्टार्ट कर दिया. ओके नाइस. उसी में 60% Why निपटा are you डाला. just क्या बात standing है. there? Let's get going. 1 सेकंड ना, एक कॉल ले रहा हूँ मैं. 2 सेकंड का कॉल है.
टैंगो कैसा? टैंगो एकदम मस्त है यार। नीचे मैं चाहता हूँ कि उसको एक अभी मैं नीचे स्ट्रीम करता हूँ एक आध दिन वीकेंड पे, ये फ्राइडे सैटरडे को, फिर टैंगो के साथ खेलेंगे अपन थोड़ा टाइम। I'm doing well. There's no need to worry. Shall we go? जितना प्यारा है ना उतना ही कमीना भी है साला वो। 32 की पिट्टी में जोंगली सीवन हो गया भाई यार, दिल जले। बट कॉन्ग्रेट भाई को मिला तो एक ही बात है। यो बॉय आई गॉट स्काईवर्ड स्पाइन इन स्टैंडर्ड बैनर। भाई क्या गोल्ड 5 स्टार सबको मिल रहे, क्या है ये? अपने को यहाँ पे दूर तक कुछ नहीं मिल रहा है। इसके साथ चलना है। थोड़ा खेला जाए यार, अब थोड़ा ब्रेक देते हैं, थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। अभी कुछ तो लड़ाई या झगड़े जरूरी है, झगड़े की खून तलवार को लगे बिना अपने को चैन नहीं आता बाबा। It's one of the Sub-Zero's festival's traditions. People used to set their tables with 7 different foods to symbolize the 7 virtues of the Dendro Archon. कितना क्यूट ट्रैवलर का ये शॉट है। We're starting from the something feels really familiar. It's appeared to be in the... Really? Paimon thought it looked like some kind of food. The moon signifies... क्यूट फैक्टर कितना अच्छी से कर पाता है। It's escaping me for now. भाई मेरे को... Wait a moment. Is he really looking छोड़ it अब up in मेरे a को book? क्या मिला क्या बताऊँ मैं तेरे को। Right. It means illusion, but if you trust your intuition and overcome your fears, the sun... Understood. Oh, it's nothing. I'm just learning as I... Guess that was still pretty interesting. Okay, on to the next stall. So, where to next? इसको मेरे को ये देना था ट्रैवलर को। फ्लूट क्यों दे रहा हूँ मैं उसको? क्योंकि वही एक थोड़ी बनी हुई थी। ये देता हूँ मैं उसको, और इसको मेरे को एक और मिली है तो इसको रिफाइन कर सकता हूँ मैं। Current crit hits have 70% chance to generate the next crit. ओके हाँ, मतलब यही जरूरत थी उसको। ये मेरे पास आज तो वेडनेसडे है। कुछ एनर्जी रिचार्ज बूस्ट देना था और बेटर हो सकता भी। वो सिर्फ आर्टिफैक्ट से ही है यार काम, बाकी ये अलग है वो अलग है क्या? ये अलग है शायद। नॉर्मल अटैक भी बढ़ाना ही पड़ेगा वैसे ट्रैवलर का। क्रूजर लोग न्यू थियोरी दे रहे हैं कि अब 2 5 स्टार कैरेक्टर निकलने के बाद एक 5 स्टार वेपन निकलेगा। अच्छा ऐसा? लोग भी दिमाग लगाते ना यार, क्या बोलने का। पर ऐसे कुछ क्या मालूम है, मेरे को नहीं लगता ये सच है। वो बहुत ही प्रिडिक्टेबल हो जाएगा वो चीज यार। वो गाचा में वही तो फन है कि कुछ भी रैंडम निकल सकता कभी भी। मतलब वो पीटी सिस्टम के साथ ऑफ कोर्स वो तो है, वो एक सच है। वो तो उन्होंने डेवलपर्स ने जो कंफर्म किया है वो बताओ बोलना हमको, ये सब मत बताओ बोलना।
हो गया, ये लास्ट ट्रिप है दुनिया जार्ड तेरी। इसके बाद तेरे से नहीं मिलना मेरे को थोड़ी देर तो भी मिनिमम। वो तलवार कहाँ मिलती है यार? वो तलवार बताओ ना अपनी। सुमेरु की तलवार कहाँ मिलती? All right, soldiers. फिर Now उसी that को you have बनाता your Yalda इसको बनाने candies, से बेटर। don't forget your loyalty to Lesser Lord Kusanali. Dismissed. Yes, Knight Ferris! अबे डीजा हो रहा है कैसे में? Ferris, the Knight of Flowers, is another Sub-Zero. It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsor. Oh, do you want some Yalda candies? I happen to have some boxes ready here. Take a look and pick whichever one. What's to pick? Don't these boxes all look the same? अबे ये तो खियाना भी। It's not that simple. Each box contains a random flavor. It's up to the luck of the draw. Flavors include lavender melon, hara fruit, sunsetia. Ooh, how interesting. And there's also lizard tail and oni kabuto. Ugh, why do those flavors even exist? Traveler, help Paimon pick one. Paimon wants to eat the sunsetia flavor. Great! These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? 3 तो नहीं 6। और कैसे बताएंगे ऐसे से? मशरूम वाले सभी मिशन कर लिए क्या? कौन से मशरूम वाले? फोटो लेने वाले? फोटो वाले? फोटो लेने वाले? इवेंट वाले बोल रहा है। इवेंट पूरा ही हो गया, पूरा इवेंट हो गया। देखते पास पास से क्या। अरे एक मिनट। Excellently chosen. Number 4 is indeed Sunsetia. Paimon bet you had incredible luck, and Paimon was right.
just now did I? Huh? But now that you mention it, Paimon also had the feeling you'd choose the right one. Maybe we didn't sleep very well last night. Or maybe we slept too much. Oh, sure. Huh? Where are you going? हाँ ना, डेजा वू पूरा ही डेजा वू था वो. फ्लेवर ऑफ डेजा वू. वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड लेके. अचीवमेंट 501 की तरफ बढ़ते हुए 500 प्लस होते हुए. इसमें दिया है क्या और कुछ इन्होंने? ये भी नहीं दिया. कमीशन. ये कमीशन से यार अपन इधर करते. अच्छा ये याद आ गया, नहीं तो फिर भूल गया था. अरे सुमेरु को क्यों नहीं है? सुमेरु के क्यों नहीं है? सुमेरु का क्या प्रॉब्लम है? रीजन्स. अरे यार हमको सिर्फ सुमेरु के चाहिए. डोमेन्स, एनिमीज. अच्छा ये गाइड में ऐड हुआ है कुछ. Ascend a Dendro character the transfer to phase 2. Chapter 3. बस इसका ही आया ये लाइक यू. बीरो दीपक बीरो क्या बोलते ब्रो? ये कौन बोल रहा था? क्रूजर बोल रहा था ना ये. तो बेसिकली ये क्या है, ग्रेवन इनोसेंस में जो पहला पार्ट है ना, मेटामॉर्फोसिस ऑफ वुड, तो इसमें बेसिकली तुमको क्या करना है, जब तुम ये करते हो ना, फोटोज लेते हो ना, तो तुमको इसके अलावा एक चीज मिलती है. इसके अलावा एक चीज मिलती है. वो चीज से तुमको इसके पास जाके, ये फोर्थ ऑर्मोस है ना, इसके पास जाके तुमको यहाँ पे वो कुछ चीजें खरीदनी पड़ती है. जैसे अब मैं तेरे को दिखाई देता हूँ, जैसे यहाँ पे ही टेलीपोर्ट पॉइंट है, तो बहुत इजी है वो करना. और उसके अलावा तो फिर वो ढूंढ ढूंढ के करने वाले ही है फोटोज वगैरह के. वहां पे लिखा हुआ है वो फोटोज के इसमें कि करना क्या है तुमको एग्जैक्टली. इधर ही गई था ना यार वो. कहाँ है वो? इधर है वो. बस ये बंदे के पास जाना. यहाँ से क्या है कि एक एक पेयर का सब खरीदना. जैसे Please let me know if you decide you want to keep. जैसे ये जो जब जमा हो जाएगी ना, तो ये एक एक चीज खरीदना है इसके पास से. जैसे एक बॉडी, जैसे एक ब्लू बॉडी होगी या पिंक बॉडी होगी या वुडन बॉडी होगी, तो उसका ये टॉर्सो है, मतलब बीच का पार्ट. वैसे फिर एक हेड होगा. ये हेड है, हेड. ये हेड है, ये हेड है. एक हेड लेने का.
एक ऐसा पूरा उसको टॉय बनाना है तुमको, बेसिकली पूरा उसका टॉय बनाना है। और फिर उसके बाद ये केप मिलता है, एक हैट मिलती है, ये सब मैंने बना लिए। देखिए यहाँ पे ऐसा बना के सब खरीद के मैंने बना लिए। यहाँ पे ऐसे 3 बने हुए हैं। तो अभी तक के इधर डिस्प्ले कैपेसिटी दिखा रहा है कि 3 ही है, तो ये 4 हो जाएगी अभी आखिरी में। और फिर ये 40 जेम्स और मिल जाएंगे इसके बाद से, वो और एक वैसा टॉय लगाने से। तो तुम वो अलग बना सकते हो। और फिर तुम ये पूरा सेट अपने टी हाउस में अपने टी पॉट में रख सकते हो। तो बहुत टी पॉट में क्या है कि ये तुमको अच्छा खासा अडेप्टल एनर्जी देगा। 200 का वगैरह भी दे दिया तो बहुत सही हो जाएगा। ऐसा 200 का देगा ये पक्का नहीं है, बट वो ऐसा मेरा प्रिडिक्शन है। 200 वगैरह के आसपास है ना, अच्छा खासा ही देना चाहिए अडेप्टल एनर्जी उसने ऐसा। और फिर तुम इसको और लेके वगैरह बना सकते हो। इसका भी अभी क्या करना है, हो ही गया ना। इसको भी खरीदना ही है अभी सब। ये सभी खरीदना है ना। सभी हो जाएगा मेरे इसमें, मेरे को लगता है इतने में, क्योंकि सभी चैलेंजेस कंप्लीट ही हो गए ना। थोड़े बच्चे होंगे, एक बचा होगा जो अब आज रात को खुलने वाले बच्चे होंगे। खत्म ना। हाँ मतलब अभी वही थोड़ा सा, ये इतना तुम खरीद सको। 20-30 हजार, 50 हजार ये मिल जाए तुमको। 20-30 हजार गोल्ड अब मोरा। और ये वो मटेरियल, थोड़ा असेंशियल मटेरियल। तो अभी जो आखिरी में खुलेगा उससे तुमको उससे वो चीजें मिल जाएगी जिससे वो हो जाएगा। बाकी पूरा खत्म है। ये खुलेगा। फिर ये यहाँ पे एक बॉला बना देना, टॉय काइंड ऑफ थिंग। ये खुलेगा आज, इसमें फोटो लेना रहेगा, उससे वो टॉय बनेगा। और ये खुलेगा नहीं, बस अब कुछ नहीं खुलेगा और। हाँ और ये खुलेगा जिससे वो बचा हुआ गोल्ड और वो ले लेंगे बस। स्टोरी लाइन भी कंटिन्यू करते हैं, स्टोरी लाइन भी कंटिन्यू करेंगे। बट अभी तो मैं लूंगा एक ब्रेक, और फिर ब्रेक के बाद वापस जब भी आऊंगा तो स्टोरी लाइन भी कंटिन्यू करेंगे। और फिर एक्सप्लोरेशन भी बहुत जरूरी है। स्पाइरल अभी इसको भी चैलेंज करना अभी बहुत जरूरी है। अपकमिंग गिव अवेज भी आ रहे हैं तो रेडी रहना। मेरे से मिलते रहो, कहीं मत जाओ। और अपन जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। दिस इज प्राउलर प्लेस साइनिंग ऑफ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। बढ़िया सुमेरु म्यूजिक लगा के जाता हूँ तुम्हारे लिए।